Hello all. Thanks for joining this session. My name is Aadhar. I see a couple of people have joined. Uh, before proceeding the session, can I get a check-in with all of you? Is my voice audible to you properly? Yes or no, please in the chat. Yes, audible. It's audible. That is great. Well, thank you. Thank you so much for the check. Okay, so I see. So this is basically about your Java interview, how to prepare for Java interview. So we are going to have this session regarding how we can prepare for Java interviews and what all things we need to take care while preparing for Java interviews. So I'm just waiting for a couple of people to join. Till then, I think you guys can start because we are a very short group today. I can say, could we have introduction of all so that so basically we are going to have problem solving session also, which means if you have any problems related to your career, related to anything, I can help you. And if you give me some context, right now is the time to give me context. So I will get about you, and then when you ask at the end of the session, I will be able to help you better. And once we join, I will also start to tell you about myself and why we are here. So anybody who wants to go, so guys, I will tell you one thing. Uh, Time is the most precious resource in this whole world. More than money, you will see like everything like capital and money will flow into every asset wherever there is a growth, right? So but so capital is very cheap, money is nothing, money is very cheap. But the thing is, time is the most precious resource. And I thank you so much that you have given me your time, which is the most precious resource. I'm not just saying it like that, I mean it. And I want to give you uh, something special in the exchange of it. I want to solve your problems. I want to talk to you about Java interviews today. So if you want to actually participate in this and take something back, the worth of your time, right? The worth of your time is much more than the price you have paid for this course, much more than the price your company pays for you or whatever, right? It is much more because we are all humans and yeah. So let's not go into that. But I just want to help you and give you the best value for these 2 hours. So yeah, let's start. Who wants to go first and introduce yourself and tell me something about yourself so that I know what is the context? So how many of you are in college? Can I have something in the chat? Let's start this session. How many of you are in college? Just give me 1 second. Let me choose a virtual background. That will save me the embarrassment. Okay. Yeah. Oh, exactly. Okay. Very good. So who all are in college? I can see Anam Siddiqui. Are you in college, Anam? Or that an answer to my previous question? Distance learning and job. Okay, that is good. What are you learning through distance, Anam? By asking this kind of question, I just want to know the demographic so that the session that we do should be valid for you, should be good for you. That's the only. Okay. Wow, very good, Anam. So you're doing MCA and AI and ML. Okay, what about else? Nobody wants to. You all have the audio permissions, right? You can go and introduce yourself. Hello, Shivani. Thanks. Okay, Janani, Okay, I'm working. Okay, great, great, Jani. Okay, Videsh is a graduated fresher. Python intern. Hmm. Okay, never say you're a Python intern. Always say you're a software engineer. SWE intern, software engineer intern. Okay, okay. I see. Got it, and I'm very good. I have heard that's a good company. In my previous company, my lead's younger brother was working in intellect designer. So I've heard good things about it. Okay. So I see a couple of people are joined, and let me start with my introduction. So just like you guys, long back ago, I'm also an alumni of this batch.
JBDL batch, Java Backend Development Life. So these JBDL batches, if you know, was started by a person called Shashi Bhushan along with Sandeep sir, and then it was maintained by Shashi Bhushan and Piyush Garg mentor. And after that, this whole series of batches started. So I think you are which JBDL version? I think this is JBDL. I'm forgetting. Just 69. okay, okay, great. Okay. So nice. So why are we here? So I hold as I have already introduced myself, but I will repeat. So I basically hold software engineering experience of 5 years, and I started my career with a service-based company from where I moved to. I struggled a lot in that company, and there were a lot of factors. I think Amit, your line is. Can you please mute your line once if you need any if you want any question, ask you any question, I can unmute you. Thank you so much. So just like most of the people, most of the graduates in India, I spent my whole 4 years of education, BTech, just watching movies, Jab We Met, Rockstar, and all those movies, and did not study. I watched Sherlock TV series, Friends TV series, a lot of things I watched. I became a connoisseur of global cinema, but at the end of 4 years, I had no knowledge of computer science. I had nothing. Data structures were a far off dream. I did not even know how to write a line in Java. uh, Interestingly, one company came to my college, and I will just wrap it up quickly. I know I don't want to bore you with stories, but one company came to my college and they hired me. They hired me as a full time role, directly as a full time role, out of as a campus placement. It was just a very simple startup or a company like in Noida. Uh, and there I went and they had some very weird rules like sandwich rule and all those rules. And okay, you can't wear sweaters in winters. And I went there for some time, 2 weeks or 1 week I went there. But after that, I was still in college. So I said to my father, I can't do this. I do not go there. I was very mad at that time. I did not understand that was an opportunity. I should have encashed that opportunity. I would have got 6 months of or 1 year of extra experience. Like right now, I'm 5 years. I would be having 6 years of experience right now. And believe me, 6 into 5. So my package would be 6 into 5. Like that, it happens in product-based companies. So, but yeah, we get wise too late and old too soon. So that's the story. So after that, even though I did not know any Java, so what I used to do is even while going to Noida in the metro station or in the metro, I used to watch a person called Naveen Reddy Telesco. I used to watch his Java videos and got myself up to speed. Uh, and after that, I started my journey into actual Java development, JSP, servlets. Uh, that was the extent of my learning in Java. Okay. Welcome to all the people who have joined. We are just getting started. This session is about Java interviews and how I can help you with Java developer interviews. What are the stages I've given interviews in all the companies that you aspire of. I have been selected and rejected in all the companies that you not expire aspire of, like Siemens, Microsoft, ServiceNow, Salesforce. I forget all the companies I am. So I've given interviews, selected in some, rejected in some. Uh, but yeah, can give you question, not the direct questions, but can give you experiences of all those things. And some very common questions that will be asked to you 100%. I can give you the schedule of rounds, how the interviews happens. All those things I am here to help you with. Okay. So after that, what happened? So my college was still 1 year was left. So the fourth year, I whiled away in all the major project presentations and all those things. And after that, till 6 months I tried, I could not land any job. So there was a time a company came to me and only five or six students from computer science in my college, and one of them was me. But after graduating, after my college ended, it took me 6 7 months to get another job. So I went to Wipro, got uh, got rejected. I sat among 300 off-campus placements. So I sat among 300 people, got rejected there. Then I went to Infosys, I got rejected there.
I went to Cap Gemini. वहाँ पे there was a 1.7 LPA package. I got rejected there. Then one day, for getting my provisional mark sheet, I went to college. From there, TCS had come, and I prayed to God that, God, this is unfair. You did not bring TCS to college. You brought Byju's for sales development role, and now for these juniors, TCS has come. This is unfair. I want to go to TCS. I was in a cab while like my friend was driving, and we were going to the metro station, and I prayed this. 1 month later, I was in TCS Gandhinagar, as fate would have had. I was in TCS Gandhinagar. That was the ILP, Initial Learning Program. If anybody's in TCS, Ultimatics, all those things, I am very well aware. TCS FS, I was there. My project, my client was a bank in Israel. So I did work there for 1.5 years. Understood that there are multiple types of software engineers, not just one. So I was not a Java developer there. I was a Java software engineer, ASC, Assistant of Systems Engineer, something like that, right? So I learned a lot there, but it was all related to functional stuff. And I was facing some personal issues and some kind of flings and all those things. So I was not in a good emotional. So I was not performing in my role. And I one day, my manager came to me and directly told me that we are removing you from this team because uh, you are not doing well. So I was very happy at the time because internally in TCS you are not. It's, changing your project is very, and because my office was 2 hours away from my home, so I thought if they put me on bench, I would get a Noida office which was 1 hour away from my home. बच्चे की thinking, right? uh, at that time I was just, I think, 20 20 20 20 21 22 at that time. So बच्चे की सोच एकदम. So today it hits on a different level कि कितना बुरा था मैं तब. अब उस वक्त there was no embarrassment, there was no शर्मिंदगी. I was in my mind, I was like, yes, यही तो चाहिए था जिंदगी में. उसकी भी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है जिंदगी में. और so many things, right? But I did one big mistake. I did one big mistake. uh, I went to my man just before they was going to release me into bench. I thought I had heard somewhere. बहुत ज्ञान लेते हैं ना, we people take a lot of ज्ञान from LinkedIn and all those things. So मैंने सुना था कि never end your professional relationships on a bad friend. So my manager was a lady. मेरे लीड को मेरे से प्रॉब्लम थी. मैनेजर वाज वो ऊपर ऊपर काम करते थे. तो मेरे लीड ने मेरे को बोला था कि वी विल रिमूव यू फ्रॉम टीम. तो मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. And then my manager was a very nice lead. Once एक so basically there's a lot of politics happening. So एक बार एक product owner ने दूसरी टीम के मेरे को पकड़ लिया था, and they were asking me some question, and I was just 2 months into the company. और एकदम से I saw my manager came, and she protected me, and she called the questions on her, and I had some respect for her. So I had heard that never end your professional relationships on a bad friend, क्योंकि life is too small, world is round, anything can happen anytime, right? So I went to her just before my release and told her that I'm really sorry, I could not do well in this job, and please forgive me, and yeah, I really like working with you. मैं जाने से पहले रिलेशनशिप को ठीक करने गया था. उन्होंने मेरे को टीम से ही नहीं निकाला. अब what problem happened is I had to work with the same lead for another 6 months. मैं और मेरा लीड एक दूसरे से इतने परेशान हो गए. मेरे लीड ने 6 महीने बाद बैंक ऑफ अमेरिका ज्वाइन कर लिया. मैंने नौकरी छोड़ दी 6 महीने बाद. So all these things happen in life. Your decisions should be correct in life. Whatever you do, your actions, your decisions, decision से पूरी जिंदगी पलट सकती है. I was very prepared. I was very happy. अपना नोएडा ऑफिस जाऊंगा. uh, उस लड़की को भी नहीं देखना पड़ेगा, और लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. uh, ठीक है. So lot of things happened. Now, after that, what happened? I left my job. I had no job. I had no job. My mother started crying when I told her that okay, I have done this and I have left the job. Big deal, right? Big deal.
she started crying in front of me and she told me I had done the worst mistake of my life, all those things. And something just came into me and I told her that whatever I earn in TCS in 1 month, the same I will earn. The same I will earn. And just on the last week of my TCS, like notice period mein, one Bangalore startup contacted me to teach C++, data structure, C++ to basically college students. So from that I used to just take 2 classes in 1 week. 2 घंटे पढ़ाता था मैं. पूरी टीसीएस की सैलरी आ जाती थी उससे ज्यादा ही. और टैक्स भी नहीं कटता था. सो लाइक दैट होता था. uh, After that I had thought that okay, I will go into teaching line. I opened my Instagram channels in when COVID hit. I opened my Instagram channels and thought मेरा बचपन से सपना था I will teach English. मैं English पढ़ाऊंगा. So I opened a channel called English का ट्यूशन. इंग्लिश का के ए ट्यूशन. एंड उससे भी कुछ बच्चों को लेकर आया मैं इंस्टाग्राम से. फिर उनसे जूम में वहां पे पढ़ाता था. यूट्यूब चैनल भी चलाया था. लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड. बट कोविड में एक्चुअली माय फादर लॉस्ट हिज जॉब. सो फिर आई एम द एल्डेस्ट सन. So I had to take the responsibility. So फिर I searched for a job and I remember there was one company, Shell, at that time, जब फ्लाइंग बीच के व्लॉग चल रहे थे उस वक्त 2020 में अप्रैल. there's one company called Shell Group है ना, ऑयल की कंपनी आई थिंक, यूएस की. सो आई जस्ट वाज प्रेइंग टू गॉड, भगवान मेरा प्लीज इसमें करा दो, किसी तरीके से करा दो, मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बट वो नहीं हुआ. Finally, I got as a Java support, TSC, technical support engineer in Java, in Informatica. Informatica is a product-based company. और मेरा कॉन्ट्रैक्टर की तरह हुआ था वहां पे. आई वेंट थ्रू अ कंसल्टेंसी. मेरी सैलरी स्लिप आती थी कंसल्टेंसी से, बट आई यूज टू, मेरा ऑफिस वही था, इंफॉर्मेटिका का ऑफिस था. एंड आफ्टर 1 year दे हैड अ प्रॉमिस टू turn me into permanent. So I will be Informatica employee, or they used to take to every year there's a kickoff. So kickoff means you will be taken to Europe, Poland, Germany, all these stuff, like Informatica product based company. So from there, I thought like, okay, Java support engineer. So basically what happened was there were products, and वो एक नाइट शिफ्ट थी क्योंकि यूएस कंपनी है. और 30 से डबल पैसा मिलता था. और what we used to do, and I will come to Java development interviews also, don't worry, थोड़ा पेशेंस रखो. I will give extra time also अगर कुछ ऐसा है तो. So उसके बाद क्या हुआ? What happened after that? हाँ, so I was in Informatica. My manager was somebody sitting in Texas, very cool person. Yeah, sure. Yeah, I will speak English. So, so my manager was a very cool person called Ravi sir from uh, uh, Austin, Texas. Headquarter of Informatica is in Texas. So I used to work there night shifts. My shift used to start. My shift used to start. Uh, just 1 second. एक second. My neighbor is calling me. 1 second. So from there, I used to learn like there were people above us who was basically PSCs, like product support or product heads, who would be who would know some Java developments, right? And what our work was basically to solve. There was a Salesforce queue, and from the queue used to pick the tickets. And वो भी एक पूरी कला है, वो भी एक पूरी, there's a art. You need to know how to pick tickets. So at the end of the month, we used to count like which software engineer or which support engineer has picked how many tickets. And so we used to take the easiest tickets, the hardest tickets, the average tickets. And our aim was to take the easiest tickets
because manager does not know if that is a easy ticket or hard ticket. He just know, okay, you have 40 tickets, take care of them. Even though 40 tickets may you don't have to do anything, or it's just they are asking for some documentation, you just mail them, the ticket closes. Some tickets would be so hard that okay, you have to replicate everything at your end, and some bug is coming. Some so at that time I did not know any Java development like Spring Boot. Then I came to Geeks for Geeks, and I studied from one mentor called Piyush Garg, from where I learned about Spring Boot, microservices, and I also got one. मैं समझ गया था कि there is no scope in support. So I got an opportunity from a bank, and I shifted to that bank. I switched to that bank as a change management in a change management role. So मेरे roles बहुत ही अजीब अजीब. My roles have been very weird. My journey has been very weird. So I'm starting from assistant systems engineer, then to English cat tuition, and then C++ data structures. Then after that, I went to Informatica, this TSC, technical support engineer on one Java product, data analysis. And then after that, I went on to one bank, and there I was doing change management. How many of you have heard about CR, change requests, change board, cab meetings? Yeah, I have heard about it. Change Yeah, yeah. So management and incident management. So, correct, so correct. Change management system. So I was responsible for the reportings, daily report, weekly report, and even what do you say, your CR processes and all those things. I was taught there. I learned there. So, that was my role there. But I when I came to Geeks for Geeks under Piyush, I learned this and I applied for IJP. And using IJP, I was able to convert a change management role to a real software engineer role. And from then, I have touch wood. I have not looked back. You know, plastic. I've not looked back. Yeah, so that's the journey. Like that's the journey. And like because of TCS, old times I have some kind of a fear or something, so I will keep giving interviews, keep preparing. So those are just subconscious fears I feel. Yeah, I have good experience of giving interviews in all companies, all level companies, even startups. Uh, so let's discuss that. Let me share my screen. Let's discuss that. Before that, any one of you has any questions before I share my screen and show you what the process is and all those things? Till now, any questions? Silence. Okay. My school teacher used to say, if there is a silence, mean everybody is understanding or nobody is understanding. Adar, I have one question. Hmm. Yeah. I have not worked on a Spring Boot till now in any company, but I am learning Spring Boot. But in the Hmm. interview, they asked about tell me about one project which you have worked in a Spring Boot. So Hmm. there I am facing difficulty. Which project to explain? This like digital library did with you till now. Actually, I have worked on banking domain. That is So fine. That is fine. You can basically you can see. Acha, chalo, I will give you one project today. I will tell you how to explain it. Okay. So you say I have worked on in an application. It's basically an application called mortgage application. Mortgage application is basically what is mortgage? House loans. Okay. Mortgage applications, what happens there is it's used by who operates that application, who is the end user of that application, tellers of the bank. जो बैंक में जो काम करते हैं ना लोग, those are the people who use that application. And what that application does is that application is hosted on some cloud like AWS, Lambda, or your PCF, Pivotal Cloud Foundry. And with that application, what you are doing, you are basically you are basically underwriting loans for customers of your bank. So something like that. See, one thing is you have to understand is there are two ways to approach this problem. Either you say the truth or either you make up a story. Now, I don't recommend any of these paths, but I will show you both paths. Whichever path you want to walk on, you can walk according to your conscience, and both paths leads to success. I'm telling you. First path is do the digital library project properly. Usme Redis, Kafka, everything you implement, understand it, and then say that
I have not worked on any Spring Boot project professionally till now. But I have done this certification where I have built this project and उसपे थोड़ा front end भी बनाओ and then deploy it and show it. If you have that kind of presentation skill, if you can speak well and good, you will get selected. I'm telling you, we look for people who are hungry for learning. Second thing is you tell, okay, I worked on a mortgage application which is used by the tellers of the bank. That means the people who work in the bank. That application used to how to say to underwrite loans, housing loans for customers of the bank. He basically raise a API request. So an application comes and that application is shown to the teller of the bank, and the teller of the bank using a AI machine learning model, which whose code is written by some other team in my company. There is a prompt shown to the teller that okay, is how what is the risk level? Is it very high risk, very low risk? So depending upon the current economic situation, like there is a economic numbers that come according to which you have to comply कि अच्छा, okay, if it's very risky, you decline the loan, you don't underwrite the loan, else you underwrite the loan. So something like that, you have to say, okay, in my application there is a CRUD functionality, the front end is written in Angular, React. Prepare करके जाओ, like you should then, if you are saying so much, so then you know कि एक CRUD application how to make. And I think anyone who has worked on this digital library project properly और अपने हाथ से 2 बार बनाया है, if you have created it, written the code 2 times like I did, I also did the same thing, same syllabus, right? If you have done, believe me, you can answer any question. So this is the thing. Thanks, Adar. Great. I see one question in a comment. Okay, I'm currently so this is getting recorded. I'll stop recording for a second. Okay. हाँ, so ठीक है. Then my role is consultant in Oracle Cloud, but my interest in should okay. 1.7 years is nothing. You can. There are people who have worked 15 years in JSP servlets, Angular, and then they convert to microservice Spring Boot. So change तो चलता ही रहेगा. Oracle Cloud HCM, right? Nothing. Just prepare for this. Have some projects. Buy your domain name or maybe deploy on Heroku if you want to free. Your backend should be deployed to Heroku. Your frontend should be deployed to Netlify. And your database, you can use a MongoDB if you want free, like Mongo Atlas. And then just have your application, presentable application. Your resume should be parsable. I think you should not face any problem. 1.7 years is nothing. Is there any follow-up question, Shashank? Great. Okay. Okay. So let me share my screen. Let me close my video so that full screen you can see. Okay. See, I'm giving you this opportunity. Like I also have not get so much opportunity till now, but whatever you ask me, I'm going to reply, and I'm going to reply honestly according to my experience. Don't ask me ki what are like. Don't ask me some ulta sida question, some weird question. But if you ask me something meaningful, and if I have like, I will try my best to reply. Okay. So yeah, Anam, I can review your resume. Definitely, I can review. There is a website called resumewordit.com. RESUME. अच्छा मैं लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे. Resumewordit.com. This will tell you your ATS score. ATS means application tracking system. So जैसे आप when you upload you upload your resume to Naukri or upload your resume to Microsoft website or whatever, Siemens website or Sopra Steria, whatever. There you are able to so basically your resume is parsed into keywords. मतलब resume is converted and looked for keywords by ATS, application tracking system. And if the keywords of the job description are found in your resume, then your resume is valid, else your resume is discarded and you are disqualified from that job. I can definitely, but this is one thing I'm telling to all. These are all things. Yeah, it will
You will learn in the industry, time लगेगा, but yeah, I'm giving you this. ठीक है. So awesome. Yeah, you can share your resume maybe. I'm not sure if you're fine if I show your resume here. I don't know if that is good for you or not. But yeah, else I can unshare my screen, look at your resume, and then also tell you. That's also fine. Whatever you prefer. So see, guys, software engineer a software engineer is a lot of types. Okay, one is a software engineer who works in a startup, like people who are very they are very how to say good in development works. Like they are very good in all these technologies. Like they will be good in Spring Boot, microservice, Kafka, Redis, session management, all those stuff they are very good in. But in their interview, the first round is a hacker rank round, but after that there are not many DSA rounds. For example, I will give an example of ServiceNow. I've given an interview for ServiceNow very recently. ServiceNow, my first is a hacker rank test which test your SQL skills. Test there's a medium lead code question जो एकदम हिला देगा आपको. Then there is a what do you say, uh, API question also, like you have to hit one API. Like HackerRank has a full suite of Java development questions. After that, you have DSA round one, which is on linked lists and arrays and strings. Then there is a DSA round two, which is on trees. Then after that, there is a technical hiring manager round, which is also DSA plus system design, low level design, depending on your experience. If your experience is less than 3 years, then most probably you will not get a system design. But if your experience is more than 3 years, then you will get system design, LLD, HLD, whatever is on the mind of that hiring manager. And then after that, there is a non-technical manager round like a HR round, like a behavioral round. Sure, sure, Himanshu, I will do that. So, software engineers of multiple types. One of the software engineers are people who work in service-based companies. That is also a beautiful life, like service-based company. If you get the right person, right, I will say people ask me what is the best company to work with. जहाँ पे आपका मैनेजर अच्छा है ना, तो the manager, person who gives you work, your team. Either it's a service based, either it's a startup, either it's a product based. Wherever the person you work with, if that person understands you now, that is the best company, irrespective of package. Because like once you go beyond 1 lakh per month, right, it's उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मैं सच बताऊं तो आई डोंट नो, मे बी पीपल आर मैरिड ऑल्सो हियर. आई एम नॉट मैरिड येट, सो इतना मेरे को पता नहीं. लेकिन हाँ, ठीक है. देन सर्विस बेस्ड, उसके बाद एक देयर आर टाइप्स ऑफ कंपनीज कॉल्ड योर पीबीसीज, जिसके पीछे ऑल पीपल आर मैड, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑल दीज कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सर्विस नाउ, सेल्स फोर्स. इसमें भी देर आर सम कंपनीज who provide work life balance, like who are high on work life balance, like Salesforce, like Intuit, like ServiceNow. There are some companies where you earn a lot of money, but they are not very good in work life balance, like Morgan Stanley. I'm just naming like this is not to target any company, but I'm just giving you what my experience. Like this, don't case मत कर देना मुझ पे. ठीक है. uh, and then notoriously, one more company, Amazon, right? All these companies, Qualcomm. So these type of companies, these are basically pay good and work-life balance also good. Pay good, but work-life balance is not very generally speaking. Again, अगर manager अच्छा है, he understands you, she understands you, you are able to communicate, then वही best company है. चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो. Then there are third type of companies like bank, GMCs, insurance, right? Your banks like JP Morgan, RBS, all these banks, right? Wells Fargo, और कौन सा बैंक है? Bank of America, Chennai, Gurgaon. So these are all your type of companies. ठीक है. Here, salary is greater than service based.
less than product based, can have good work life. Generally, banks have good work life balance, but it's highly subjective depending to which company. Like अगर आप सिंगापुर की किसी company में if you will work, then there is not very good work life balance because 996 work culture, right? China and Singapore. But if you work for banks of Europe, then you will get a very good work culture, right? Informatica mein the division where I worked, it was from Germany. So I used to work with German people. Strat to what, pata nahi, what is the spelling? I don't know how to pronounce it. I don't know, but I used to work with German people. So very good. Uh, then there is one more thing that I want to tell you. What, what was I wanted to tell? Just one second. Give me 1 second. Let me hold my thoughts. So service based, product based. Maybe there are achievable product based companies. Achievable product based, which don't ask so many rounds of DSA, like Simmons, like हाँ, I remember what I was going to say. पहले लिख देता हूँ फिर से भूल जाऊंगा. So third type of companies which hire Java developers are consulting companies, guys. Consulting companies. PwC, Deloitte, EYC, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ. EYC, Ernest and Young, Ernest and Young, E&Y, sorry, हाँ, Ernest and Young. ठीक है. यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इज प्रीटी मच, again I am saying out recording, but generally I'm saying this, work life balance is generally screwed up. Like my neighbor works in one of these companies and he tells me पैसा बहुत है, पार्टीज हर हफ्ते हैं, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस इज प्रीटी स्क्रूड अप. ठीक है. I was talking about product based companies which you can aim for with knowing just maybe just the level of linked list. Still linked list, if you know, and you are having decent easy questions you are able to solve in lead code, then you can target for Siemens, you can target for Sopra Steria. All these, Sopra Steria has its own product division also. I'm not able to write Sopra Steria. There is a office in Noida, if anybody knows. You can target for Paytm here, like this. Okay, so this is basically my understanding till now. Amit, I will come to your question. I will come to your question. Anybody wants to ask anything till now? I have two questions already piled up. One is by Himanshu to review his resume. One is by Amit, uh, how to call one microservice from another microservice. I will explain that. But before we go there, anyone has any question on these type of companies, please feel free to ask. Take away your time's worth. Okay, Arjun just joined. So Arjun, this is basically a session on preparation of Java interviews, like where all these companies are where Java developers are hired. So service-based companies like your Cognizant, TCS, Accenture, Infosys, Wipro, Capgemini, right? Capgemini. Then there is product-based companies which don't ask too hard DSA, like they will ask lead code easy. So Paytm, Sopra Steria, Siemens. Then there is proper product based companies like Google, Microsoft, Salesforce, Intuit. यहाँ पे भर भर के all rounds are data structures, LLD, system design, PARAs are all this type of rounds. But there is good work culture and good work life balance in these companies. यहाँ पे these are companies which pay a lot of money, lot of stocks. मतलब senior management, like person of 15 years experience get. So मेरे ऑफिस के ऊपर ही है Qualcomm का ऑफिस. So the people who have 15 years of experience in Qualcomm got 1.5 crores of stock worth of stocks, extra of salary. But काम बहुत है. दिन भर they are on office. You have to understand that. Then this is JP Morgan Chase. Like these are banks, GMCs, insurance companies, right? MetLife and all those companies. They also need Java developers. यहाँ पे work life balance is good. Salary is more than service based, but you have to choose which country's bank you are working. If you work in Bank of China or some Singapore or something, so there is 996 culture. Uh, and if you are working in a European or American bank, it will be still manageable. I think China, I don't know if any China's headquarters is in India, but Singapore का तो बहुत सारे banks India में है. Okay. Then there are consulting companies like PwC, Deloitte, E&Y. Here, lot of money, lot of stocks, good opportunities. Every week there is a party. Every Friday there is a party that you go at night after work hours.
पूरा सब कुछ मौज मस्ती, लेकिन बहुत काम, लाइक रात के 10-10 बजे तक देर इज काम, सो बट बहुत पैसा. So this is that kind of. So this is basically what I know, what is in my experience, what is all my network. Like I said, you should work in a company where you should work in the company where you get the right person, not go after, like, even if you get here, that is very good. If you are able to learn here, learn from that person, if you are able to, basically, you should be able to communicate what you feel even if you are here. Like, I know one of my mentors, he's very famous, but he went to Microsoft and he was not able to communicate. His manager did not understand. He was a backend engineer. They gave him front end to do. He was telling them, okay, I don't know how to do this, but they were forcing him in Microsoft. Understand? In Xbox division. So उनको वहां से 1 साल में छोड़ना पड़ा. Right? So it is not money. It is after a point of time, after 3-4 years, money हर जगह बहुत है. But you have to see where the learning is, right? Okay. Arjun, any questions? Anybody, any questions? Else I will take question of Amit Kumar. Come on, quick. Tell me quickly. Come on. अभी तक any question? Okay. किसी ने ऑडियो तो ऑन करी लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा. आई एम म्यूटिंग यू अमित. Okay. Hmm. Okay, I got some questions. That's what the session. That's what these special sessions are for. Himanshu, I will review your resume in 5 minutes. Okay. Amit का क्वेश्चन लेते हैं. How to call one microservice from another microservice? So Amit, there are multiple ways to call one microservice to another microservice. First thing is called the synchronous communication between microservices, which happens through your REST APIs, right? So there is something called REST template with HTTP client. So you can call from your code to another microservice. So you basically give it the whole URL endpoint. You give it the whole request body. Like अगर get hai, तो you don't give any request body. If it's a post, put, patch, then you give it a request body, and that's how you make a request using REST template, using web client, web flux. These are the things you need to study about them. Second way to communicate from one microservice to another microservice is a asynchronous way. Have you heard about Redis PubSub model? Or the next topic that I think Meet was telling me that he will start in your batch, that is messaging queues. So एक microservice will publish one event, and that from that topic you will have multiple subscriber microservices who have subscribed to that event. So जैसे ही वो event आएगा, the subscribers will basically consume that event, and then they will perform whatever activity you have on application event में जो भी लिखा है, like that. Does that answer your question, Amit? Yeah, yeah. I Great, got it. Yeah. great, great, great. Okay. Okay. So apart from hi, I would like to ask one thing. Like apart from DSA and all, for a candidate like having a less than 1 year, 2 year experience in a well-established company, what is the ask for? Like apart from DSA, like the project he has worked on, like for case of in case of myself, I worked on Spring Boot. So at what level of interview I can expect from a tier two company, not the Fang or Mang, but my goal is for tier two. So what level of basic, I mean, I don't know how deep they can go in technical terms, but what I can expect, and according to that, how I can shape myself to get it done. Like, so How much experience do you have? less than 1 years, like 11 months. Less than 1 year, you will be stuck. I'm telling you. If you try to do it less than 1 years, 11 months, and notice period you will serve 2 months or 3 months, depending on your company. Mm-hmm. It will basically, I will tell you how HRs think. Mm-hmm. So HRs will think that there is some problem in it. I'm telling you. My best suggestion would be complete 2 years.
I know Mm-hmm. might be hard, it might be toxic, whatever your circumstances, I have no awareness about that. But I will highly suggest you complete 2 years and after that खुल के पैसा मांगो. अगर आप अभी करोगे ना, आपको कोई एचआर नहीं, मतलब जो भी एचआर करेगा दे विल बेसिकली शॉर्ट चेंज यू, क्योंकि But नीड आपकी है. correct, correct. But there is something like the role switching, like you are working on DevOps, let's say, but your goal is to really get into the software development side. So something is can't, I mean, this is resisting, like can't continue 2 years in the role of DevOps and environment stuff. Okay. So Hmm. because at the end, it is the loss of 2 years for me, if talking in terms of development experience in the journey. So at that time, competition may be high also, like. सी अगर मैं आपकी जगह होता अपने एक्सपीरियंस से, तो मेरे को पता है कि पीपल हु हैव 8 years एक्सपीरियंस आल्सो दे आल्सो वर्क ऑन द सेम माइक्रो सर्विस, वो भी वही गिट चेकआउट करते हैं ब्रांच को, दे विल आल्सो चेक आउट द सेम ब्रांच फ्रॉम योर फ्रॉम इंटीग्रेशन. इफ यू हैव 1 year's एक्सपीरियंस यू विल आल्सो डू द सेम. सो व्हाट आई वुड हैव डन इन योर सिचुएशन, आई एम नॉट सेइंग यू डू दैट. मैं अच्छे से डेटा सक्सेस प्रिपेयर करता टाइम लगा के, और क्योंकि दैट 8 years रहा, उसके पास इतना टाइम नहीं है डेटा सक्सेस प्रिपेयर करने का. एंड मैं अच्छे से डेटा सक्सेस प्रिपेयर करके अपने आप को, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ टिल मीडियम लेवल. इट वुड हैव Mm-hmm. टेकन 6 months, 8 months. Mm-hmm. एंड फिर मैं डायरेक्टली आई वुड हैव गॉन टू सम कंपनी लाइक अ सर्विस नाउ और वेरी गुड कंपनी, क्योंकि उसके बाद मैं जहां पे भी जाऊंगा, सो Mm-hmm. बेसिकली द थिंग, द वे एचआर एंड कंपनीज थिंक इज, दे विल सी योर पैटर्नेज, योर एलो, कहाँ से हो आप बेसिकली. Mm-hmm. So they will see, okay, working in Infosys, okay, nahi, reject. I'm Mm-hmm. not saying that. I am myself from TCS, right? Mm-hmm. They will think like that. Okay, working in Paytm, okay, product. They can work in product base. Selected, okay, go to interview, give chance for interview. क्योंकि Got इतना it. कंपटीशन है इंडिया में, so I will definitely say, जैसे you do lead code, Mm-hmm. 6 months लगाओ, 1 year लगाओ, Mm-hmm. अपना पूरा बेस, क्योंकि इवन आई एम 5 years एक्सपीरियंस, मुझे आज भी रोज लीड कोड प्रैक्टिस करना होता है. Mm-hmm. सो Got it. ना जो बेसिक्स है, योर बेसिक्स शुड बी वेरी गुड. Mm-hmm. योर बेसिक्स शुड बी वेरी गुड इन डेटा Mm-hmm. स्ट्रक्चर्स, एलएलडी पढ़ो, हाउ टू राइट कोड, So राइट. talking about the way you just said, like focus on DSA. So let's say if I be focusing on DSA for about 8 to 10 months and prepare myself well enough to crack. So the ask at that point, if I be able to get some interview, so the ask at that time would be mainly focus on DSA rather than focusing on the technologies I have worked or I'll be going to work. So. डिपेंड्स ऑन विच कंपनी यू गो. अगर इफ यू गो टू दिस कंपनी, Mm-hmm. दिस काइंड ऑफ कंपनी, फर्स्ट राउंड ऑफ डीएसए, Mm-hmm. हैकर रैंक राउंड, वन Mm-hmm. डीएसए राउंड, जावा डेवलपमेंट राउंड. Got it. If you go here, hacker rank round, which will have some REST API, they will give you create one REST API. They will give you one lead code medium question, one SQL question, SQL query, and after that all rounds are DSA rounds. Got it. Yeah. तो एक चीज फिक्स करो, आपको कहाँ पे काम करना है, एंड Okay. देन उसके लिए अगर इफ यू जस्ट केटर टू ऑल ऑफ दीज ना, आप कहीं के नहीं रहोगे. But. मुझे पता है इसमें से मुझे कहाँ काम करना है, और मैं उसी के लिए तैयारी करता हूँ, उसी के लिए करता हूँ. मुझे पता है दिस आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन, सो आई फोकस ऑन हेयर. मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ ऑलवेज. ये हूँ, ये तो किस्मत है. दिस इज बेसिकली लक. इंटरव्यू राउंड्स आर सो हार्ड. हैकर रैंक में जो क्वेश्चन आया था इज सो हार्ड. मतलब कितने भी आई हैव प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस, Mhm. लेकिन इट इज इट इज ऑल्सो लक. बट ये लक नहीं है, दिस इज नॉट लक. इसके लिए यू कैन प्रिपेयर, यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि मैं ये क्रैक कर लूंगा आफ्टर 6 months प्रिपरेशन. Okay. I think अगर आप if you do the projects of this batch properly, Mhm. you don't need to worry. I'm telling you, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जावा डेवलपर. It's easy only. Got it. So that's how I would have done. I would have gone all in on data structures, 6 months all in, and उसके बाद wherever I go, पूरे पैसे लेके जाता मैं अच्छे से. हेलो। Yeah, it's yeah. मैं ये पूछ रहा था कि अगर वो डीएफए बहुत अच्छे से कर भी ले, स्टिल वो हम्म. एज कहाँ पर मिलेगा, मतलब अप्लाई करने में एज कहाँ मिलेगा? हाँ, तो then he will have to basically, ये बैच भी करने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं. So this batch also they will basically prepare. ऐसा नहीं कि बैच नहीं करोगे. जो डिजिटल लाइब्रेरी का ओके। प्रोजेक्ट है, यू मेक इट प्रॉपरली, पूरा समझो उसको, रेडिस कैसे काम करता है, काफका कैसे काम करता है, एंड इट्स ओके। वेरी इंटरेस्टिंग.
What is not interesting is DSA. What is interesting is this course is very interesting. Redis कैसे काम करता है, Redis में कीज कैसे स्टोर होते हैं, पूरा पढ़ के जाओगे और फिर आप करोगे. Java developer interview is very easy. Cracking the first hacker rank round, then DSA round is the hard work. ये जो डेवलपमेंट का राउंड है वो आता ही तीसरे नंबर पे. अंडरस्टैंड? आप वहां तक पहुंचोगे ही तब जब आप डीएसए से पार करोगे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके. इन ऑल कंपनीज, यहाँ पे भी ये सब, यहाँ पे तो पूछते ही नहीं है. डिपेंड्स ऑन क्लाइंट. अगर क्लाइंट आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया यहाँ पे, जो कि टीसीएस का क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट है, देन तो पूछेंगे. So यहाँ पे 100%. हाँ, टेल मी. so things got stuck in when it comes to DSA. So the main ask is DSA first. So for a guy like experiencing 1 year and 2 years, so he would be targeting some tier two companies that I mentioned, like JP and apart from Fang, like the level one down, like Goldman and American Express, like those. So at the experience of 1 year, less than 2 year, basically, let's say. So will they ask for what technologies I have worked on? Would the interview would be JD specific, like it is front end only and we expect you to be a front end engineer? या 100% वो अगर they will see, if they are hiring you at experience, Mm-hmm. their ask will be according like back end developer or full stack developer or whatever, right? Whatever you put in your resume, according to that they will come to you. Got it. So Okay. you Yeah. prepare Spring Boot also, right? Spring Boot you can prepare. I don't think इस course को prepare करने में कोई problem आएगी. This course is Mm, good, not at all. Yeah. Yeah. right? So like that you think. Yeah, adding on to the Himanshu's question, see, मैं अभी currently TCS में वर्क कर रही हूँ, and the problem is this कि जो work मेरे को अभी दिया हुआ है, that is not that much related to the Java, because they don't ask us what they will give us. So this is a problem. और जब मैं change कर रही हूँ, when I want to go in a Java field, so there is a blocker. मतलब ये सब तो तब हैकर रैंक तक तो तब पहुंचता है कि जब आपका resume shortlist होगा, Hmm, राइट. अब अगर करंट एक्सपीरियंस लगाया, 110% इट विल गेट रिजेक्टेड. correct. अब उसको चीज को कैसे, मतलब या तो हाँ, फिर उसको मैनिपुलेट करो. नहीं मैनिपुलेट क्यों करना है? बेसिकली देखो, you are preparing for Java this course is Java developer course, करेक्ट. हाँ. right? You go to the JD. ठीक है, जैसे मैं अगर अभी, लेकिन मैं नौकरी खोलूंगा तो बहुत कुछ दिख जाएगा. इतना भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ठीक है. तो बेसिकली वट एवर यू आर लर्निंग इन दिस कोर्स, स्प्रिंग बूट, जावा 11, जावा 8, lambda streams, everything you add as keywords in your what do you say, in your resume. और थोड़ा सा आई विल, अगेन मैं रास्ता दिखा सकता हूँ कि देर आर टू वेज. एक तो आप सच बोल दो, दूसरा आप अपने रिज्यूमे में लिख दो कि आई वर्कड ऑन दिस एप्लीकेशन. प्रोजेक्ट्स. हाँ, लेकिन डू जस्टिस बाय लर्निंग. चीजें सीखो. सीखने वाले के लिए गीक्स फॉर गीक्स में, यूडेमी में इतना कुछ है. आप चाह के भी उतना सीख ही नहीं सकते, इतना कुछ है सीखने के लिए. टीसीएस में यूडेमी है ना. जब मैं निकल रहा था तब हाँ, यूडेमी करेक्ट है. दिया था उन लोगों ने. हाँ, उन है. लोगों ने यूडेमी दिया था, राइट? हाँ, मैं सोचा यार 1 महीने पहले मिल जाता तो एक बहुत सर्टिफिकेट भी लेके मुश्किल से दे जाता. रहे हैं. उसका बहुत हाँ, हाई लेवल, यूनिट लेवल कर दिया है उसका एक्सेस के लिए. कोई नहीं, 300 200 300 रुपए का तो कोर्स है हाँ, वो यार. हो जाएगा, तो हो माना कि कम है सैलरी, लेकिन इतनी भी नहीं. जाएगा. करेक्ट. हाँ, तो यू टेक, देयर इज पर्सन कॉल्ड सर्गे कास्परलॉफ, यूडेमी में. अगर यू वांट टू गो इनटू, अपने से भी पढ़ना है तो पढ़ो. पढ़ने के लिए विल टू लर्न इज लैकिंग, रिसोर्सेज लैकिंग नहीं है. प्रोडक्ट बेस का पूरा सामान है बाहर. करेक्ट. रिएक्ट सीखो. जो डिजिटल लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, सब एपीआई, कितना यू विल, सीखो. ऑल ऑफ यू विल बात ये क्रिएट है कि एपीआईज. कितना सीखेगा इंसान. देयर इज हाँ, नो लिमिट. हाँ, इंटरेस्ट सी, दैट हैज कम टू फ्रॉम इंटरेस्ट, राइट? अगर सॉफ्टवेयर में इफ यू एक्चुअली वांट टू स्टे हियर, तो इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना कैसे रहोगे? प्रोडक्शन इंस्टेंट आ जाएगा तो भाग जाओगे फिर तो, राइट? डेवलपर का इतना प्रोडक्शन इंस्टेंट आता है, व्हाट विल यू डू? When you will become developer, you will write code will go to production में इंसिडेंट आएगा, they will catch hold of you. क्यों आया ये प्रोडक्शन में? क्योंकि एसवीपीज और सब सब आर अकाउंटेबल, राइट? उनका बोनस टिका है उस पे. सो देन यू हैव टू इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप टिक सकते हो, वरना नहीं हो सकता. और इंटरेस्ट कैसे आएगा? जैसे आई गॉट इंटरेस्ट बाय दिस कोर्स एक्चुअली. Yeah, that's actually working for me as well.
हाँ, so Okay, correct. Another इतना thing is प्रेस कि, see, I'm almost having around 2.5 year experience. So there is myth. I don't know if it is myth or it is correct. That they are saying that it's better to change after 2 years, because after 3 years the expectation will be too much. Is this real? no, there is no such thing. बल्कि आई विल से अच्छे से अपना 3 years कंप्लीट करो. होता क्या है, हाउ एचआर लुक एट इट, आई विल, बिकॉज मैं एचआर के साथ भी काम करता हूँ, मेरे घर में बहुत सारे एचआर हैं. तो एंड इवन इन माय कंपनी द एचआर हु हायर्ड मी, मेरी उनसे भी दोस्ती है, सो आई अंडरस्टैंड उनसे भी हाउ एचआर वर्क. दे विल सी दैट ओके एचआर कैंडिडेट हैज चेंज हाउ मेनी कंपनीज, कैंडिडेट अपने रोल में कितना टाइम से वर्क कर रहा है. आई विल से सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलेगा जो स्टार्टिंग से लेके 4 साल तक, अगर somebody इज इन कंपनी, आप मुंह मांग के पैसा मिलेगा आपको, वट एवर यू आस्क, डिपेंडिंग ऑन, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. अगर इन्फोसिस से मांगोगे तो आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, बट या, सो आई विल से अगर आपको, इट शुड ओनली बी डिपेंडेंट, आपको सीखने को मिल रहा है, डोंट मेक इट मैकेनिकल. So there थिंक is ऑफ, nothing like this myth. It's हाँ just us. थिंक, हाँ, दिस इज जस्ट अ मिथ, दिस इज जस्ट, Correct. दिस इज Okay. नथिंग. थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक एन आर्टिस्ट, आपको सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, थिंक ऑफ लाइक दैट, राइट. Thanks. Thank you. ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, बेस्ट जावा प्रोजेक्ट टू स्विच फॉर करियर रोल्स. डिजिटल लाइब्रेरी को अच्छे से पढ़ो, क्रिएट फ्रॉम योर ओन हैंड्स, 2 बार बनाओ, देन स्प्रिंग सिक्योरिटी उसमें इंप्लीमेंट करो, काफका रेडियस उसमें इंप्लीमेंट करो, देन यू लर्न रिएक्ट. रिएक्ट सीखो खुद से, क्योंकि इस कोर्स में दे विल नॉट टीच यू रिएक्ट, बट रिएक्ट यू लर्न. यूडेमी में देयर इज भरपूर, गिग्स फॉर गिग्स के भी बहुत फ्री रिसोर्सेज हैं. एंड देन यू क्रिएट वन फ्रंट एंड फॉर योर एपीआई, एंड दैट एप्लीकेशन यू डिप्लॉय टू हेरोकू, फ्री, क्रेडिट कार्ड चाहिए लेकिन फ्री है, राइट. एंड देन आफ्टर दैट शो टू द इंटरव्यू, राइट. एक डोमेन नेम खरीदो, लाइक मैंने अपने लिए एक डोमेन नेम खरीदा है, आई डोंट नो इफ यू विल अप्रिशिएट इट और नॉट, किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, बट आई परचेज अ डोमेन नेम फॉर माई सेल्फ फॉर 10 years, 10,000 रुपीज में. एंड 10,000 रुपीज में, राइट, आई स्टे इन सम अदर प्लेस अपार्ट फ्रॉम माई होम, मेरे जोमेटो का बिल 10,000 रुपीज है, तो मेरे एक महीने का बिल इज 10,000 रुपीज फॉर फूड, एंड 10 years तक डोमेन नेम इज 10,000 रुपीज. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द आर्बिट्राज. सो देख लो, whatever feels like it. How to apply for this company is up. You can basically, Naukri is the best resource, I will say. Naukri, and you uh, so there was one point I went on to LinkedIn and just मैं हर HR को I was adding. So अभी मेरे पास 3,000 HRs का I have connection, but I don't go to LinkedIn. LinkedIn I don't like, it's a little bit toxic, I don't like it. Yeah, Naukri, I will say Naukri is the best. Naukri is the best. There is something called as high rect or high risk. High risk से भी there is mails comes, but कुछ नौकरी नहीं खरीद लिया है, सब कुछ नौकरी का ही है. So yeah, yeah, you can share your resume directly to me, Anam, in this message only, like a direct message, and then on Zoom only. And then what I will do, I will unshare my screen, check your resume, and then tell you what you need to. Okay, how to prepare smartly for any company in a less time, what topics should we focus. So I will say smartly के लिए तो देखो, microservice to microservice communication you should know. Spring Boot में you should know all the annotation, enable @ enable auto configuration, what does it do, @ Spring Boot application में what all there is, internal working of hash map. मेरे से जापान की टोक्यो की कंपनी ने भी पूछा, और सारी इंडियन कंपनीज ने पूछा. You should know about scalability. Like once I went for a Siemens interview and the hiring manager, the top person, grilled me for 1 hour, और उसने मुझे इतना सुनाया, because he asked me all questions related to scalability in microservices. ठीक है, so you should know about scalability, थोड़ा system design. You should have interest. कैसे, how do you make snake and ladders, कैसे बनाओगे, right? Interest लाओ, that is the thing. इसको mechanical process मत बनाओ, बहुत लंबा, you have to go 30 years career में, खूब पैसा कमाना है, right? Okay. And in Java development, there is one topic called internal working of hash map. I already told. There is one topic called how to make a class immutable. That question is asked to me every time in every interview, and I say, sir, there are 5 steps. अभी याद नहीं है, गूगल करके बताऊंगा. तो एक बार तो मुझे इंटरव्यू से ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन हाँ, how to make a class immutable. I have a question. I have completed 3 years. Oh, sorry. Okay.
I'm just reading one question. Give me one second. So Janani, I will say to you, my advice to you will be, you have completed 3 years. That is very good. You are trying to switch. So I will say for you, the best thing to do right now is, for most of you, the best thing to do for you is, ये course अच्छे से करो. You have to do this course properly. The projects of this are very good. Like there is a payment application. वही तो चाहिए आपको, पेमेंट एप्लीकेशन. इफ यू नो हाउ टू क्रिएट, देयर इज, उससे ईमेल भी ट्रिगर होता है कुछ. देयर इज सो मच, राइट? सो अच्छे से यू डू दिस कोर्स, अच्छे से यू डू दिस प्रोजेक्ट, देन यू मेक दिस प्रोजेक्ट बाय योर ओन हैंड्स. राइट डाउन व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस, बिकॉज ये पूछा जाएगा व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस व्हाइल मेकिंग दिस प्रोजेक्ट. 100% अगर आप मेरे साथ इंटरव्यू में आएगा, आई विल आल्सो आस्क यू द सेम थिंग. एंड देन you also learn React. इसका फ्रंट एंड भी बनाओ, एंड देन शो टू योर इंटरव्यूअर. पुट दिस लिंक, हेरोकू लिंक, या डोमेन ले सकते हो तो whatever, put that link. Agar if I see, right, agar ye application is created by, and one thing I see missing in so many resumes, guys, I will tell you, the create a portfolio and एक website बनाओ अपनी, and उसमें your story should be there. How HRs get resumes is Java developer 5 years, Java developer 5 years, 5 years, 5 years, 5 years, 5 years. क्या competitive edge है? What is your competitive edge? Spring Boot आता है, दुनिया को आता है. ये कोर्स 69वां बैच है. 69, इससे पहले हम 100 बच्चों को पढ़ा चुके हैं स्प्रिंग बूट, राइट? आप में और उनमें क्या फर्क है? यू नीड टू हैव अ स्टोरी टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ. एक हैव योर, फ्री में बता रहा हूँ, GitHub पेजेस पे यू कैन हैव, लाइक माय, आई आल्सो हैव अ GitHub पेज. HTML CSS थोड़ा सा सीखो अपने फ्री टाइम में, एंड देन क्रिएट योर स्टोरी. और रिएक्ट में कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है एज अ प्रोजेक्ट. एक पोर्टफोलियो बनाओ, वहां पे अपनी स्टोरी, अपनी इमेजेस लगाओ, तो आपकी जर्नी क्या है, राइट? विकिपीडिया जैसा पेज बनाओ एक. फिर इफ आई गेट दैट पर्सन, इफ आई सी कितना डिफरेंस है, कितना एफर्ट पुट है, तो वाई आई विल डेफिनेटली हायर यू. आई वुड वांट टू वर्क विथ यू, क्योंकि अलग लोगों के साथ ही तो आप काम करना चाहते हो. रन ऑफ द मिल ऐसे तो बहुत लोग हैं, 3600 लोग हैं. लाइक द प्लेस वेयर आई वर्क, देर आर 20 फ्लोर्स. 20 फ्लोर्स में जावा डेवलपर्स काम कर रहे हैं, पाइथन डेवलपर्स काम कर रहे हैं. कोई डेवलपर के साथ काम नहीं करता है, इंसान के साथ काम करता है. तो बिकम इंटरेस्टिंग, have a competitive edge, and that you can get by telling your own story to HR, to basically अपने email signature पे लगाओ naveen.com, if your name is naveen54.com, whatever. एंड उस नवीन 54 को अगर मैं क्लिक कर दूं ना, तो क्लिक करने के बाद अगले 2 सेकंड के अंदर आई शुड बी फैन ऑफ यू. आई शुड सी योर होल स्टोरी फ्रॉम चाइल्डहुड तो अभी तक क्या क्या करा, माई अचीवमेंट्स, माई ट्रैक रिकॉर्ड, ये करा, ये करा, 12वीं यहाँ से करी, फिर ये करा, फिर ये करा. Basically create a connect which is missing. I see, I also filter resumes for my team, but I genuinely say competitive edge होना बहुत जरूरी है. I hope this helped, Janani, right? And ये back end तो सीख रहे हो, front end भी सीख लो. It's front end is more interesting than back end, I will say. Okay, I'm reading Amit's question. I just also wanna ask one thing. Just wanna go back about the discussion over the DSA. So, I have experience. I've given 30 interviews, but I experience like if your some of the companies will be allowing you, so will be satisfying in the concept of the DSA theory, like the brute force approach and what the simple BFS, DFS, like an example, like implement the BFS only. So they'll be satisfying till that level only. But some companies really give you the code forces question where they will force you to give the logical implementation with the proper coding syntax of it. So how would you suggest, like, for a smart approach in a short time, what would be the best approach to learn DSA till that level? Like, So basically, I will say there is a thing called Neat Code 150 questions. I can tell you, if you do that Neat Code 150 questions, I think you will catch on the patterns कि अगर कोई नया code forces का question भी आएगा तो you will be able to do. But हाँ, there can be, there are multiple questions which are very special questions. जैसे कि एक question which if you know you can do, like I am forgetting Pascal's triangle, right? जिसको आता है Pascal's triangle वो कर पाएगा. But it's a special case kind of question.
ऐसे क्वेश्चन भी डीएसए में है. इंट्यूटिव क्वेश्चंस आर आल्सो देयर इन डीएसए, राइट? इंट्यूटिव क्वेश्चंस like buy and sell stock, rain water trapping. Those Yeah. questions are easy to do because you are able to imagine. But Yeah. Pascal's triangle and case up बारे बहुत सारे तरीके क्वेश्चन that you will not be able to imagine also. Correct. So it's, I will say, you should have one base. So base की तरीके से you follow some sheet. GFG की sheet है, Striver की sheet है, Love Bubber की sheet है. One sheet you do properly. Neat code 150 एक sheet है, blind 75. Whichever YouTuber or influencer or whatever you have trust upon, जिस पे trust हो, सबके सेम ही क्वेश्चन है आगे पीछे करके, ध्यान से अगर देखोगे तो आप. So So you properly do that, and then whatever new question you encounter, create an Excel sheet and अपने पास रखो. And if you are not able to do, then you practice after the interview and उसको add करो अपने skill में basically. So That is what it. does you suggest? Solving the sheet directly and learning the concept then and there, or learning the concept and then going to the question? What's the best way? Striver sheet में they teach you, and then they Striver sheet, for I follow Striver sheet. Striver sheet में they teach you. There's a video, and then there is a question. There's a video, there's a question, and for every question there is a video. So I Okay. basically go through Striver sheet. That sheet only. Okay. Thanks. Okay, like it's very subjective. Yeah. Okay, Shashank is asking what is the best way to practice DSA. I have already told. I follow Striver sheet. You can. There is also, we also have a live batch if you want to learn from us. We also do a good job. We hire all the top product based people to teach, but it depends upon you. Whatever suits you. Okay. Okay, I've downloaded your resume, Anam. I will open it for sure. Okay, what can be average expectation for a Java developer roles as a fresher? देखो यहाँ पे Java developer का 3.5 lakhs or 3.6 lakhs मिलता है. अगर if you cross digital और power programmer उसका डबल हो जाता है. यहाँ पे फ्रेशर का 7 लाख मिलता है, 8 लाख मिलता है. पेटीएम में 12 लाख भी मिलता है. Sales was all में stocks and like this is different league. Let's not talk about this. This is also different league. यहाँ पे you will get around 10 lakhs, 12 lakhs freshers के लिए. कंसल्टिंग में यू विल गेट अराउंड 8 lakhs, बट इट क्विकली जम्प्स अगर आप हार्ड वर्किंग हो और यहाँ पे बहुत काम कर सकते हो एंड यू हैव दैट क्षमता, देन यू कैन अर्न लॉट हेयर ऑल्सो. इनके स्टॉक्स भी बहुत चलते हैं इनके, बट यहाँ पे रहने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना. बट हाँ, इट्स, आई हैव सीन लाइक इंडियन पीपल जनरली, like us Indian people are very hard working, and we are basically family oriented, so we don't face much problem working hard also. So depends on which type of person you are. I am more like of this kind of a person, and I want to be this kind of a person, work in all these companies. So हर किसी का अपना सपना है, right? Okay, Salma is asking one question. I'm reading that. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Okay. So see, you have an advantage, right? Even if you have forgotten Java in 1.5 years of break, but still, right? आपके पास तो experience है ना paper पे. You have, on paper you have experience, so you can bank that out. And in every organization, Salma, I'm telling you, you are, I think you are not looking properly, maybe, or you are not aware right now. In every organization there is a women comeback program. Like all companies where I've worked, they have women comeback programs, and you have to reach out to HRs on LinkedIn and tell them your situation and ask people for referral, and upload your good resume after checking your resume worded score, like making it properly. On Overleaf, there is a website called overleaf.com where you can create your resume, which is a parsable latex resume. Once you create that, you check its score. Once you check its score, you upload it to naukri.com. You add all the keywords there properly. अपना अच्छे से description रखो. एक video बनाओ अच्छी सी. Put your एक phone से अच्छी सी एक video बनाओ. उसके लिए पहले अपनी script लिखो. You write your script. Okay, my name is Salma. I have this experience. I took a break for this reason, and then I am ready to work. And yeah, I have this experience. And कुछ भी अपने बारे में अच्छा. I really love reading books, and something you say interesting in the end, right? I can bet you will get a job, because uh, it's not. I am saying this, and don't get offended, anyone. I'm telling you, but we need more women in tech, and because of that, we also have a lot of diversity hirings, which is, I know, a black word.
Most people don't like this kind of words. It's good, right? It's opportunity. It's opportunity, right? So you use that opportunity. This women come back program. Use that opportunity. Reach out to HRs. Make connection to HRs. Send message. Make connection to HRs. Every day send 10 messages. ज्यादा भेजोगे तो योर अकाउंट विल बी बैंड. मेरा एक अकाउंट बैन हो चुका है 4000 फॉलोअर्स का. उसके बाद फिर से बनाया. So yeah. Does this answer your question, Salma? Expectations from like interview perspective, Hmm. like it's a sort of a like fresher again. No. Not fresher. You do this course properly. Nobody is fresher. मैं 2 साल तक I did not work in Java. I was in change management, support engineer. नौकरी भी छोड़ दी. उसके बाद फिर मैंने 3 अलग अलग काम करने के बाद मैं फिर SD Java में गया. But still I was able to catch on. So it's understand that your expectation from you will be more if you go on experience. But women comeback program, I don't think they will put so much burden on you because they also understand, right? You have 1.5 years of break and you are going legally. You are telling them, okay, 1.5 years of break. So itna expectation nahi aayega. I don't know what the pay, how your pay will be decided. Will they give you the last pay that you got? कैसे होगा? I don't know that, but definitely इतना pressure नहीं होगा. बहुत लोग करते हैं and there's a lot of support for this. आप बात नहीं कर रहे हो HR से. You are not talking to HRs on LinkedIn. You need to contact them. Message करो सबको. कोई ना कोई reply करेगा. And you put your resume in Naukri. Uh, not coming from geeks for geeks, but I'm telling you a personal suggestion. There's a 1500 rupees per month premium subscription. If you're in dire need of job, why not? It will open your resume to all the HRs, right? But work on your resume. Resume अच्छा होना चाहिए. That's the thing. If you need help, reach out to people. You can put message in your group. There will so many people who are working in all these companies. वही आपको रेफर कर देंगे. और रेफर करने का भी सबको पैसा मिलता है. They will get 50,000, 60,000 rupees. And women candidates का double मिलता है. I'm telling you, मेरी कंपनी में at least women candidate if I refer, I get double the. अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए लेकिन I'm telling you the truth. सच बोल रहा हूँ. Does this answer your question, Salma? Any follow-up question on this? Yeah. Thanks for the heads Yeah. up. You need to reach out to people on LinkedIn. Reach out करो, right? Okay, great. Okay, Manshu, I'll unshare my screen and then Yeah, my question, Adhar. yeah, Amit, tell me your question. I have pinged actually. Second You have read question. Yes, I pinged in the chat. I will. tools used for development of REST APIs for Java code review. What are the tools? हाँ, so the tools for development of REST APIs. Basically, REST API is nothing but just code लिख रहे हैं ना. You are writing a controller. So that is basically your IntelliJ ID or Eclipse ID depending on which company you work on. Like आपकी company basically IntelliJ use कर सकती है community edition. Some companies use Ultimate Edition depending on the company you work with. For example, in my first company, they were using Eclipse. In my Yeah. current company, they use IntelliJ. In my previous company, also they use IntelliJ. So this I also And use, but any other tools are not being used, no, for development of REST API. no, this is just code ही लिख रहे हो ना. You can write this code in Notepad also. उससे क्या फर्क पड़ता है? बस हाँ, it will be easier in ID because it will prompt you. Okay. And for Java code review, what are the tools we are using? Java code reviews, like there is something called Bitbucket, GitLab. Basically, just like you have GitHub, right? So some companies also use GitHub, but अभी तक कोई GitHub वाली कंपनी से पाला नहीं पड़ा. But majorly Java वाली companies will use Bitbucket or GitLab. Code review means doing code review of your हाँ, juniors or pull yes. request, right? Pull request you are talking about. No, any issue in the code that it will highlight means like memory wise, heap memory or some. हाँ, okay. So you are talking about monitoring. Yes, yes. So there is app metrics, app dynamic,
there is Kibana. In my For previous Java company, code review, do you have any tool? Java code review? the code review कि मेरे Yes. किसी जूनियर ने कोड लिखा है, वो मेरे को पुल रिक्वेस्ट Quality मारना of है the अपने code. You can say क्वालिटी. हाँ, quality. सोनार. Sonar. So, okay. We have sonar. So our Jenkins pipeline has sonar checks. So वो पास नहीं होता तो then you have to go to sonar dashboard, फिर fix करो sonar issues को, and then again you commit your changes and then again run the pipeline. तो वो मेरे पास पीआर रेज ही नहीं कर पाएगा जब तक उसका सोना जेनकिंस पाइपलाइन पास नहीं होगा. और जेनकिंस पाइपलाइन तभी पास होगा व्हेन ऑल द रिपोर्ट्स आर फाइन. वी हैव ऑल दिस प्रोसेसेस इन चेक. Okay. Okay. Okay, I will do now resume review of Himanshu. I'll unshare the screen because he asked me to unshare. Okay, okay, I'm finding your resume first of all. Okay, I got your resume. Okay, Himanshu, first of all, remove this inquisitive, hardworking, adaptable. बहुत desperate लग रहा है ये. पहली बात Okay. तो Okay. मैं ट्रूथफुल हो सकता हूँ ना, हाँ हाँ बिल्कुल. है ना? ठीक है, पूछना पड़ता है आजकल लोगों से. ठीक है. You have how much experience? Like 10-11 months. 10-11. So remove this. सिर्फ अपना बीटेक रखो, 10th 12th हटा दो. No need. Okay. 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 Then maybe नीचे हिमांशु के नीचे you can write software engineer Java ऐसे करके लिख सकते हो. Got it. Yeah. Okay. तब मजा आएगा. Yeah. Right? Then technical skills, good. Here you can add more technical skills, Spring MVC, Hibernate, सब कुछ डालो. कोई भी job description, you pick up one job description and then Uh-huh. add all those terms here from that job descriptions. Okay. But yeah, this is done nicely only. Okay. Good. In work experience, okay. Collaborate with हाँ, this is done nicely. But इसमें I am not able to see the impact of your work. So कुछ number डालो कि I improved the code base and improve the performance of the application by 10%, और उस 10% को bold करो. Something Right? like kind of Some code quality. code quality, हाँ, numbers होने चाहिए आपके resume में. I'm Okay. not able to see numbers. उससे मेरे को आपका impact पता चलेगा. Basically, that's a standard. That is Okay. checked in product-based companies. Okay. Okay, companies तो बहुत अच्छे में काम करा है आपने. So you are directly working with this company you have Yeah. mentioned? Yeah. Yeah. Very A good, very good. full-time employee. Yeah. Very good. Experience is very good. Why do you want to like अच्छे से यहाँ पे I will say use करो इसको. क्या Uh, कोई problem है क्या यहाँ पे apart from DevOps thing? Yeah, basically in my 4 year of BTech journey in college, I was totally specialization in DevOps. So I was expecting some DevOps role only. But getting into the team, I was given a DevOps role, but it was not much utilized by the team. Like the team requirement was not that much on core DevOps. Hmm. So I thought to just go and switch. Like I just wanted to remain in the banking domain only. So I Hmm. thought to change the If you role. Like change so early ना आपका resume में problem आ जाएगा. मतलब see different things different. कोई टीवी से फिल्मों में जाता है, कोई डायरेक्टली लॉन्च होता है, कोई यूट्यूब Mhm. से टीवी सीरीज में जाता है मिसमैच में और फिर वहां से फिल्मों में जाता है. सो बहुत सारी जर्नीज हैं एक जगह पे जाने के. ठीक है. Okay. तो कोई एक रास्ता नहीं है, लेकिन बट आई नो इज Mhm. इफ यू थोड़ा मेरे को अगर ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा ना यहाँ पे 1-2 साल रहने का, 2 साल रहने का, Mhm. तो मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्रेडिबिलिटी मिलेगी उससे आपको, और नाम बहुत अच्छा है आपकी कंपनी का Mhm. मार्केट में. Mhm. सो यू अगर अभी छोड़ दोगे ना तो आप उसको लेवरेज नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू लेवरेज इट. खुल के Okay. पैसा नहीं मांग पाओगे. एचआर के पास अपर हैंड रहेगा, लेकिन 2 साल एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास अपर हैंड रहेगा, क्योंकि यू Got it. यू यू हैव स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस. Yeah. बाकी यू साइड. Yeah. Second, Okay. Interval also very good company. प्रोडक्ट बेस वाला लग रहा है मेरे को तो रिज्यूमे एकदम. हाँ. वेरी गुड. वर्क ऑन. ये वर्डप्रेस हटा दो यहाँ से.
मैं वो हटाने का ही सोच रहा हूँ पूरा. हाँ, उसमें भी कुछ जावा का ही डालो, क्रिएटेड वन CRUD एप्लीकेशन विच मॉनिटर्स द एप्लीकेशन हेल्थ समथिंग लाइक, देन कुछ कहानी बनाओ यहाँ पे। Actually, that was the start of the college journey, so I could able to get that much only. So हाँ, okay, कि और C++ डेवलपर मत रखो, एक अपनी एक स्टोरी कंसिस्टेंट रखो कि मैं बचपन से ही जावा डेवलपर हूँ, ठीक है, बचपन में भी got it, लिखता था जावा, ऐसे बनाओ, got तब it. आएगा मजा। Okay, Projects are good. Projects में you can add this after this course, you can add the yeah, payment I've application that you planned will to. Yeah, create, एंड उसको अच्छे से, if you are hard working, आप उसको फ्रंट एंड भी बनाओ, उसको डिप्लॉय करो AWS बीनस्टॉक में, एंड देन यू गिव द लिंक, थोड़ा got it. खर्चा करो, डोमेन खरीदो अपने नाम का, थोड़ा मतलब फ्री में ना, दैट डिफरेंशिएट्स, कितने लोग पैसे देंगे और अपना डोमेन खरीदेंगे, राइट? Got it. Yeah, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, पैसा सब चाहते हैं, तो got it. मेहनत करो, पैसा आपके पीछे भागेगा एकदम। एचआर को यू हैव टू इम्प्रेस, एचआर इज नॉट टेक्निकल, एचआर वेबसाइट देखेंगे, दे विल फॉल इन लव विद यू, यू हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट लाइक दैट। Okay, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स, डोंट राइट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू कैन, हाँ अचीवमेंट्स ही लिख सकते हो उसका नाम सिर्फ। okay. टेक्निकल हेड ऑफ कॉलेज यू हटा दो, बेकार है ये। हाँ, दिस इज गुड। आर्टिकल का लिंक भी तो अगर दे सकते हो तो यहाँ पे है क्या, इंटरनल था क्या वो? No, not they're not internal. It was a published book, so I'll mention. Yeah, हाँ, लिंक होना चाहिए ना यहाँ पे। yeah, yeah. ये हटा दो, थर्ड वाला पब्लिक रिलेशन हेड का कोई यूज नहीं है। पार्टिसन स्टेट लेवल, हाँ बैडमिंटन वाला रहने दो, थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला अच्छा रहेगा। Okay. फर्स्ट और थर्ड हटा दो, उसकी जगह कुछ अपनी करंट कंपनी का डालो कि आई पार्टिसिपेटेड एंड Yeah, hackathon कुछ and all. कुछ कुछ हैकेथॉन या कंडक्टेड हैकेथॉन, और Yeah, मे बी मेंटर टू स्टूडेंट्स इन, टू फ्रेशर्स, ऐसे कुछ करके, या मेंटर got it, टू इंटर्न्स, क्योंकि अब अभी तो आप खुद ही फ्रेशर हो, तो मेंटर टू इंटर्न्स एंड ब्रॉट देम अप टू स्पीड, प्रोजेक्ट कोड बेस, समथिंग got लाइक it. दैट। Okay, got it. बाकी रिज्यूमे इज गुड, आई डोंट थिंक इट्स इज इट अ लेटेक्स रिज्यूमे, कैसे बनाया ये रिज्यूमे? Sorry, didn't get what. इज इट अ ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, हैव यू चेक्ड एवर? Not at all ATS friendly because I checked on हाँ, multiple लग नहीं रहा। website. Yeah. So some website gave me 35 score while the other one throws out 85. So हाँ, तो यहीं पे वो एक था ना, यहीं पे कृपा रह रही है। yeah, I think I need to make some major या changes. यू नीड Yeah. टू गो टू ओवरलीफ, Yeah. ओवरलीफ वेबसाइट पे गो एंड सिलेक्ट वन टेम्पलेट, और वहां पे फ्री है, यू जस्ट गो एंड मेक द रिज्यूमे अच्छे से, Okay. Yeah. फाइल योर, मतलब आई विल से, अगर यहाँ पे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत भारी पैसा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, HR एकदम फ्लैट हो जाएंगे, बट रहने वाली बात है और समझने वाली बात है, और कुछ नहीं, अच्छे से DS से पढ़ो, और अगला जो जंप लो, डायरेक्ट गो टू सीमेंस। सीमेंस में कितना अच्छा काम होता है, सी फूड मिलता है, मेरी सिस्टर काम करती है सीमेंस बैंगलोर में, शी टेल्स मी सी फूड मिलता है। मेरे को खुद को चेन्नई का मिला था ऑफर, Okay. लेकिन कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स थे तब। तो आई विल से कि अच्छी कंपनी में यू कैन गो, Uh-huh. प्रोडक्ट बेस में डायरेक्टली यू कैन गो, वाई Mm-hmm. टारगेटिंग फॉर बैंक, बैंक में कभी स्केल ही नहीं मिलेगा आपको इतना। Just तो for a work-life balance. हाँ, तो सीमेंस में देयर इज अ वर्क, जर्मन कंपनी है भाई, सीमेंस इज जर्मन, जर्मन कंपनी, जस्ट टॉकिंग अबाउट सीमेंस, बट सोप्रा इज अ फ्रांस बेस्ड कंपनी, Uh-huh. और लॉट ऑफ कंपनीज, पेप्सिको। अब योर रिज्यूमे इज वेरी स्ट्रांग, मैं दिन में बहुत रिज्यूमे देखता हूँ, बहुत इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत इंटरव्यू देता भी हूँ, Mm-hmm. तो योर रिज्यूमे इज स्ट्रांग। Okay. अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ गया यहाँ का, तो Uh-huh. अगला बैंक भी बहुत अच्छा बैंक हो सकता है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंट्यूट जैसा, Correct. इंट्यूट इज Yeah. फाइनेंशियल, राइट? JP Mm-hmm. मॉर्गन चेज काम बहुत कराता है, लेकिन बहुत बोनस देता है, बहुत पैसा देता है, माय फ्रेंड्स वर्क Okay. देयर JP मॉर्गन चेज में। बाकी अगर बाकी अगर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो पैसा इतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, दे बैंक्स गिव वर्क लाइफ बैलेंस, दे विल गिव यू, बैंक ऑफ अमेरिका Yeah. चेन्नई में भी है, गुड़गांव में भी है, राइट? Yeah. सो अच्छा रेज्यूमे है, इसको मतलब स्टार रेज्यूमे बना सकते हो, और लक्षण लग रहे हैं स्टार रेज्यूमे बनने के, Mm-hmm. बट कितने महीने रुकोगे अभी, और उस पर डिपेंड करेगा ये स्टार रेज्यूमे बनेगा नहीं बनेगा। एंड HR विल ओनली सिलेक्ट इफ इट्स अप टू, मतलब पहली जॉब में अगर 2 साल एक्सपीरियंस है तो, मतलब प्रोडक्ट बेस वाले सिलेक्ट कर लेंगे आप, चलिए। Okay, then I should wait for some time, like या completing 1.5, 2 years. Then I'll start looking for करेक्ट, others. Yep. Meanwhile, खुद I खुद could तक focus प्रिपेयर on करो, preparing LLD, DSA. Yeah, DSA पढ़ो, LLD. LLD पढ़ो, इतना Okay. इंटरेस्टिंग है LLD, गो एंड
मतलब यहाँ पे Geeks for Geeks में भी पढ़ाते हैं, अच्छा है बहुत, वरना यूट्यूब से भी यू कैन स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स, Okay. यू कैन स्टडी, Yep. राइट? Yep. Okay, very Yep. good. Thanks for your inputs. Yeah. Nice resume, nice Yeah. resume. I will Thanks. now, I think one more resume I got, one more resume I have got from, I think, okay, Anam से आया था मेरे पास resume. I saved that resume. Let me open it. I will not share my screen. Opening that. Okay. Okay. सबसे पहले तो फोटो हटाओ. ये resume मेरे को ATS friendly नहीं लग रहा. This resume is not looking as ATS friendly. मतलब generally I'm telling you, जिन HRs को मैं जानता हूँ, they say that फोटो नहीं होनी चाहिए. मे बी कहीं कहीं पे दुनिया के किसी कोने में फोटो भी होनी चाहिए. लिंक्डइन लिंक नहीं है ये, लिंक्डइन लिंक है क्या? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ खुलता है क्या? ओके, खुल रहा है. HTTP लगाओ इसके आगे. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना आप, तो HTTP लगाओ लिंक्डइन के लिंक के पहले. ओके, दैट इज गुड. जावा डेवलपर, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट. ये 1.11, ये ऐसे लगता है कि ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. 1 ही कर दो इसको. डेवलप एकदम मंथ्स में क्यों गिन रहे हो एकदम? या तो 2 लिख दो, 1 महीने बाद डाल देना नौकरी में. डेडिकेटेड. ओके, गुड. मतलब समरी में बहुत ठीक है, लेकिन समरी की एक्चुअली में जरूरत नहीं है समरी की. इफ आई वर यू, आई वुड हैव रिमूव समरी. Okay, good. You also have a very good parentage, like a very good company in which you are working. उसका बहुत अच्छा नाम है. I think it's a product-based kind of a company, Anam, if I am correct. Checking the chats, I am. Yes, है ना? तो बहुत अच्छी कंपनी में आप काम करते हो. वेरी गुड. 2022 से काम कर रहे हो, राइट? तो अभी अब तो होने वाले हैं 2 साल. वेरी गुड. प्रोडक्ट इंजीनियर, वाह. Okay. Very good. Very good. वेरी गुड. जब आप यूजर इंटरफेस पे भी काम कर रहे हो, तो व्हाई यू जस्ट राइट जावा डेवलपर? फिर तो फुल स्टैक हो गए ना आप. तो फुल स्टैक लिख सकते हो अपने. फुल स्टैक की ज्यादा वैल्यू है. फुल स्टैक के लिए ज्यादा कॉल्स भी आएंगे. मोस्ट मोस्ट जावा जॉब्स आर एंगुलर प्लस जावा और एंगुलर प्लस, सॉरी, रिएक्ट प्लस जावा. एकदम बिल्कुल जावा के लिए फिर दे विल वांट जावा AWS काइंड ऑफ रोल. Second thing, in your professional experience also, you don't have any numbers. I don't see any numbers. ऐसा होना चाहिए. Improve the performance of this application, or the runtime of this application, speed of this, remove latency from the application by 15%. कुछ भी random figure डालो, लेकिन उसको डालो और उसको highlight करो. Mentored 2 interns and brought them up to speed in code base. ऐसा लग सकता है कि ये सब झूठ है, लेकिन असली में ही पढ़ा दो ना किसी को. बैठो किसी के साथ एक दिन और उसे, इंटर्न को पढ़ा दो, कोड बेस के बारे में सिखा दो. आपने 2 साल काम करा है, राइट? आफ्टर वर्किंग 2 years यू मस्ट नो सम अबाउट सम कोड बेस, राइट? ओके, गॉट इट अनम, आई गॉट इट. ठीक है. सो असली में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन बना दो. लिखो कि आई हैव क्रिएटेड डू यू हैव कॉन्फ्लुएंस, अनम, इन योर कंपनी? डू यूज कॉन्फ्लुएंस और सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? कहाँ बनाते हो फॉर योर एप्लीकेशंस? Test cases you can, test cases also, that is fine. Test cases is basically JUnit test cases, that is fine. But documentation नहीं बनाते आप. जैसे if you develop a feature. No, Arjun, basically we are talking about not about you. We are talking about internal. ऐसे नहीं देख सकती ना कि मैंने एक अर्जुन इंसान को पढ़ाया है. नहीं, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है. हाँ, so whatever you are worked upon, उसका एक, no worries Arjun. Whatever you are worked upon, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाओ अपनी कंपनी में, और फिर वो इंटर्न्स को दो. और असली में यहाँ पे लिखो कि आप मेंटर इंटर्न्स एंड रोट दिस डॉक्यूमेंटेशन. और फिर समझाओ इंटरव्यू में कितना सारा काम करा है आपने. जावा, स्प्रिंग बूट, माइस्क्ल, पोस्टग्रेस, काफका, जेनकिंस.
Equibase. Good. So write some documentation on whatever feature you have worked, और help करो लोगों को असली में, तभी कृपा आएगी असली में तो. And yeah, this is good. Professional projects. जब भी प्रोजेक्ट्स डालते हैं ना, देखो ना, समरी उड़ा दो इसमें से. फ्रॉम योर रिज्यूमे रिमूव द समरी. समरी आई डोंट लुक. इवन एचआर डोंट लुक समरी. आपके रिज्यूमे में एक ही भी प्रॉब्लम है, योर रिज्यूमे इज नॉट वन पेज. योर रिज्यूमे शुड बी वन पेज actually. Technical skills, good. You have added a lot of things. That is a good point. There's no problem with that. Achievement spot award, very good. Great, great, very good. School you can remove, just you and keep the last university where you studied. Uh, Languages also you can remove. Nobody wants to see which languages you know. Okay, so this is was very truthful things. Did you note down something, Anam? Great, great. ऐसे मत सोचो अनम. So what you are thinking is like what you are doing is not, and what they are paying is not justifying. Don't think like that. इतना short term सोचोगे तो क्या होगा? Think like that कि it's like a university. आप कितने लोग TCS Infosys में ही फंसे रह जाते हैं 4 4 साल, 8 8 साल, फिर उनको याद आता है कैसे निकले. आप तो शुरू से इतने अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यू आर वर्किंग. Think it like it's a learning institution. Always have a positive mindset. आप सोचो आपके रिज्यूमे की वैल्यू कितनी बढ़ाई इस कंपनी ने. लाइक इफ आई एम एन एचआर, आपको मैं अच्छा खासा पैसा दूंगा फॉर योर नेक्स्ट रोल. देयर इज अ ज्वाइनिंग बोनस होता है 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का आपके लेवल पे. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एक रिलोकेशन बोनस होता है, स्टॉक्स होते हैं. ऑलवेज रिस्पेक्ट. लाइक आई वाज आल्सो वेरी वेरी बेटर विद माय फर्स्ट कंपनी, बट क्योंकि बहुत कुछ हुआ वहां पे, बट मैंने ही काम नहीं करा ना. प्रॉब्लम तो मेरे साथ ही थी. और जहां से जो भी मिलता है उसको आशीर्वाद की तरह लो. Like, take it like a blessing. Actually, everything is a blessing. Like when I see at your resume, I feel I am getting impressed with your resume. So that is very good. Okay. Baki. ठीक है. So I'm telling you, the biggest problem with your resume is, so the biggest positive, क्योंकि चीनी लगा के कोई भी बात बताते हैं, जब भी फीडबैक देते हैं तो चीनी लगा के देते हैं. तो biggest positive of your resume is your company. Most of the freshers 11 महीने में भाग जाते हैं, 12 महीने में भाग जाते हैं. उनके रिज्यूमे को हम डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं. हमें बोला जाता है एचआर से डायरेक्टली रिजेक्ट करो. आप 2 साल कंप्लीट करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, राइट? तो आपका एक रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग है, आपका पेरेंटेज, आपकी कंपनी बहुत स्ट्रांग है, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रांग है, आपके एप्लीकेशन स्पॉट अवार्ड बहुत स्ट्रांग है, राइट? सेकेंड, यू आर अ वुमेन इन टेक, सो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. वी नीड मोर women इन टेक, राइट? मैंने बताया ना, मेरी जो फर्स्ट मैनेजर थी, अगर कोई मेल होता तो वो बचाने नहीं आता, क्योंकि वो फीमेल थी, वो बहुत समझती थी. दैट्स व्हाई शी केम टू प्रोटेक्ट मी इन माय, जब मैंने ज्वाइन करा. ठीक है. बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर रेज्यूमे इज, योर रेज्यूमे इज नॉट एटीएस फ्रेंडली. आपकी इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन आपका कभी भी रेज्यूमे पार्स ही नहीं करेगा, कीवर्ड ही नहीं निकाल पाएगा. सो मेक योर रेज्यूमे थ्रू अ वेबसाइट कॉल्ड overleaf.com. अच्छे से रिज्यूमे बनाओ, फिर रिज्यूमे वर्डिट.com पे जाके स्कोर चेक करो. अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर से चेंजेस करो. एक पेज का रिज्यूमे ढंग से बनाओ, उस रिज्यूमे को सजाओ, फिर उस रिज्यूमे को नौकरी पे लगाओ, और फिर नौकरी की प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बनाओ, इस कोर्स को अच्छे से करो, एंड देन वट एवर पैकेज यू वांट, वट एवर ग्रोथ यू वांट, यू विल गेट. आई एम टेलिंग यू, बिकॉज योर रिज्यूमे इज वेरी गुड, एंड आई सी resumes डे इन एंड डे आउट. आई एम टेलिंग यू, it is not as good as the previous person's resume. You will get an upper hand because uh, yeah. Okay. Good. So any other question, anything is left? Any other person has anything to ask? Okay, Shivani. Sure, Shivani, I will check. I will download this, save this, and then I will open this.
Okay, your resume is looking very good. It looks like ATS friendly. Good. GitHub का लिंक डाला है, वेरी गुड। यहाँ पे मेरे को आपका डेजिग्नेशन नहीं दिख रहा, डेजिग्नेशन भी होना चाहिए इन द हेडिंग। शिवानी सिंह के नीचे होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल लीड, वट एवर यू आर। ओके, समरी उड़ा दो, समरी की कोई जरूरत नहीं है आपके रिज्यूमे में। ओके, समरी उड़ा दो। टेक्निकल स्किल्स वेरी गुड, अच्छे से आपने डाला है। इसमें फ्रंट एंड में 1-2 घंटा स्पेंड करो किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल पे, या तो एंगुलर सीखो या रिएक्ट सीखो। रिज्यूमे में शॉर्टलिस्ट जल्दी होगा आपका रिज्यूमे अगर एंगुलर या रिएक्ट भी डाल दोगे फ्रंट एंड के अंदर, इतना मुश्किल नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस, डेवलपर की जगह सॉफ्टवेयर डेवलपर डालो, ठीक है। डेवलपर एक बहुत हल्का वर्ड लग रहा है मेरे को, सॉफ्टवेयर डेवलपर डालो। सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आपकी कंपनी का तो नाम है ही नहीं, ये क्या है? ओके, कोई तो बहुत तेज शोर कर रहा है। इसमें शिवानी एक प्रॉब्लम है इसमें, वो कहाँ है? आपकी कंपनी का नाम ही नहीं है इसमें, मुझे ना दिखे इसलिए उड़ा दिया क्या? आयु दे। क्या? हाँ, तो इसमें आई कैन नॉट सी कंपनी नेम, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर कॉमा पेटीएम, सॉफ्टवेयर डेवलपर कॉमा माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर कॉमा गूगल, सॉफ्टवेयर डेवलपर कॉमा सुप्रा सीरिया, वट एवर, वेर एवर यू वर्क, राइट। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, टाटा टाटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक्नोलॉजी इज गुड। अगेन इसमें रिज्यूमे में एक प्रॉब्लम है, कि ये 1 पेज रिज्यूमे नहीं है, 1 पेज रिज्यूमे चाहिए होते हैं एचआरस को। डिस्क्रिप्शन, बहुत पढ़ने वाला मटेरियल है। ऐसे लिखो सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके नीचे 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करो कि आपने क्या करा है। ऐसे एक पहले प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो, फिर टेक्नोलॉजीज दे रहे हो, बहुत सारा काम लग रहा है मेरे को पढ़ने में। जस्ट टेलिंग यू व्हाट एक्चुअली पीपल फील, ट्रूथफुली बता रहा हूँ, ठीक है। देन ईटीएल डेवलपर, गुड projects, good, good. In your work experience also, first of all, company name is missing. Second thing which is missing is impact. तो एक नंबर लिखो यहाँ पे कि अच्छा बैंक एप्लीकेशन में आई एम द ओनर ऑफ 2 microservices and I own the any new changes from scratch, any enhancements, any bug fixing, I own all that stuff, ऐसे कुछ लिखो। तो वो 2 जो आएगा वो 2 एक नंबर होगा, इम्पैक्ट डालेगा। एजुकेशन में जस्ट कीप द बीटेक, रिमूव योर स्कूल, हटा सकते हो चाहो तो। अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशंस, ये हाउ टू यूज चैट जीपीटी एंड जनरेटिव एआई ये हटा दो, ये कंपनीज आजकल वैसी परेशान है इससे, ये बैन है हर कंपनी में, लाइक मेरी कंपनी में तो बैन कर दिया इन लोगों ने, तो देखेंगे तो और चिढ़ जाएंगे। गुड 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 गुड, थर्ड पॉइंट इज गुड। customer satisfaction, good. Good. Interest learning और हाँ, so your resume is good, लेकिन 1 पेज होना चाहिए, 1 पेज होना चाहिए। एंड इम्पैक्ट डालो इसमें, और मेक श्योर ये एटीएस फ्रेंडली है, और समरी उड़ा दो। आई होप दिस हेल्प शिवानी। एनी क्वेश्चंस यू हैव? हाँ, एंड कंपनी नेम, आई होप यू नोटेड दिस ऑल डाउन। ग्रेट, very good. Good resume, Shivani. Good work. I really like the way your resume starts. It's very appealing. Good. Okay. So I think we are done. Anybody has any question? Can you please like share one ATS friendly resume on the WhatsApp group so that we can also go through that and make the resume from like that?
यार 100 लोगों की रिज्यूमे बनाएंगे तो फिर तो गेम ही ओवर हो गया ना, No, no, मतलब। मतलब just to take the reference, not we like same, हाँ नहीं create करेंगे सब same, but हाँ so that we can take the reference of that. ये सो देखो, देयर इज वन थिंग कॉल्ड ओवरलीफ। ठीक है, ओवरलीफ में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। आई कैन शो यू। बेटा अपना रेज्यूमे तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो होनी चाहिए ना, लेकिन टेम्पलेट्स आई कैन शो यू। रिज्यूमे, सीवी। हाँ, सो यू कैन सी दीज आर ऑल वन पेज रिज्यूमे। जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल अनम हैड हर पिक्चर, सो अनम इफ यू वांट टू कीप योर पिक्चर, सो इस तरीके का टेम्पलेट यू चूज, जैक स्पैरो टाइप, तो इसमें फिर अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आप 2 पेज का रिज्यूमे बनाओगे, उसमें सबसे पहले पिक्चर डाल दोगे, तो इट्स ऑफ पुटिंग एक्चुअली, राइट? एज अ प्रोफेशनल इन द प्रोफेशनल सीन, आप टेलिंग। ठीक है, यहाँ पे दिस रिज्यूमे इज गुड, दिस इज एटीएस फ्रेंडली आल्सो। यहाँ पे आप इसको टेम्पलेट लेके एडिट कर सकते हो यहाँ पे। तो दिस काइंड ऑफ आई कैन पुट द लिंक। अब सब लोग एक ही रिज्यूमे को एडिट मत करने लग जाना, पूरे बैच का एक ही रिज्यूमे बन जाएगा फिर। दिस इज वन And एग्जांपल। is it mandatory to like put the GitHub link or LinkedIn link? If so, basically GitHub is where we like push our projects. If the project is not there, so is it mandatory to mention that link? नॉट मैंडेटरी, बट इट्स बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए चाहिए ना। सब जावा डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, 100 लोगों ने अप्लाई करा, Mm-hmm. एक एक ने मेहनत करके गिटहब में प्रोजेक्ट डाले हैं, अच्छे अच्छे गिटहब में प्रोजेक्ट्स डाले हैं अपने, गिटहब पेज बनाया अपना अच्छा सा। गिटहब पेज, यू नो राइट, यू कैन डेकोरेट योर गिटहब पेज, और वहाँ पे बहुत Mm-hmm. सारी चीजें लगा सकते हो आप। आपके बैचेस होते हैं, आप इफ यू आर अ रेगुलर कमिटर तो वहाँ पे आपको बैचेस मिलते हैं। आप अपने लीड कोड का बैच लगा सकते हो वहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं होता तो मैं तो अपनी वेबसाइट लगाता, उस वेबसाइट को ऐसा ब्यूटीफुल बनाता, उस वेबसाइट के थ्रू पूरी कहानी बताता अपनी। और फिर वो मुझे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, मुझे एक ऐसा पर्सन पसंद करते, जो भी। एचआर भी मेरा रिज्यूमे देखेगा, एचआर फिर टेक्निकल लीड को देगा, टेक्निकल लीड फिर मेरा रिज्यूमे, मेरा वेबसाइट खोलेगा, फिर हायरिंग मैनेजर मेरा रिज्यूमे, मेरा वेबसाइट खोलेगा। तो मैं सबको ऐसे ऐसे इंप्रेस करता है इंटरव्यू से पहले ही, टू हैव एन अपर हैंड। बेसिकली स्ट्रैटेजी, राइट? तो ऐसे, लेकिन मेहनत लगेगी इसमें, और मेहनत करने वाले लोग कम है, लाइक दैट। और गिटहब में अच्छे से प्रोजेक्ट अपलोड करो। कितना टाइम लगता है यार प्रोजेक्ट अपलोड करने में? जस्ट क्रिएट एक गिट इनिट करो, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाओ, उस प्रोजेक्ट को यू पुश इट टू गिटहब, उसको अच्छे से सजाओ, उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखो ढंग से। इफ इफ देयर इज गिटहब लिंक में जाके देखूं, आप डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो, टेस्ट केसेस लिखते हो। आई वांट टू बेसिकली, मैं अपनी टीम के लिए अगर हायर कर रहा हूँ तो मैं ढंग का बंदा हायर करूंगा ना। मैं ऐसी किसी को भी हायर कर लूंगा तो फिर तो मैं ही फंस जाऊंगा ना, बिकॉज आपका कोड तो मैं ही रिव्यू करूंगा आगे चल के। तो वो तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, मैं अपना काम बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं गलत बंदे को हायर करूंगा तो मैं अपना काम बढ़ाऊंगा। तो मैं क्या देखूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप लीड कोड में चैंपियन हो या आप बहुत अच्छे हो या जो भी हो आप। मेरे को फर्क ये पड़ता है आप कोड कैसे लिखते हो। अगर आपका कोड एकदम आप आ रहे हो किसी प्रोडक्ट बेस से, लेकिन आपका कोड ही, आप टेस्ट केस नहीं लिखते, योर कोड इज नॉट अप टू द लेवल, देन व्हाट इज द यूज, राइट? सो मेरे को गिटहब पे तो आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, प्रूफ ऑफ वर्क है। वहां पे पूरा अपना रीडमी फाइल बनाओ, उसमें अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन करो, उस गिटहब के रीडमी फाइल का लिंक दो अपना। टेक्निकल लीड क्या चाहता है? टेक्निकल लीड चाहता है कि उसके नीचे जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करें, वो ढंग से काम करें, मेहनत से काम करें, और कोड बेस को देयर इज अ प्रिंसिपल आल्सो, बॉय स्काउट रूल फॉलो करें, मतलब कोड बेस को बेटर करें, कोड बेस में कचरा ना मचाएं, टेस्ट केस अच्छे से कवरेज हो कोड बेस की, बग आए तो समझ पाए हम, डॉक्यूमेंटेशन देखे पूरा फ्लो, राइट? ओके, so you want to also check the resume? I will check your resume, Gopi. Just give me 1 second. Let me unshare the screen and then open your resume. Okay, I'm saving your resume. Then I will go and open your resume. फाइल ही नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ? ओके, मिल गई। गोपी यादव, वेब डेवलपर। वेब डेवलपर क्या होता है? देयर इज नथिंग कॉल्ड वेब डेवलपर। या तो ऐप, वेब ऐप डेवलपर होता है,
या आप which role you want to apply with, give that developer. एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड डेवलपर, जावा के लिए जावा डेवलपर, वेब डेवलपर। अब वो 2000 बीत गए, 2000 नहीं है अब। ठीक है। दिस इज लुकिंग टू मी गुड, ATS फ्रेंडली काइंड ऑफ रिज्यूमे। आपने कोई फॉर्मेट फॉलो करा है, अच्छे से हाईलाइट करा है, लाइकिंग योर रिज्यूमे। ठीक है। देयर इज ईमेल, देयर इज अ लिंक्डइन लिंक। बहुत खाली खाली लग रहा है मेरे को आपका जो टॉप की हेडिंग है। मतलब ऐसे आपने एक लेफ्ट में आपने एक नंबर दे दिया अपना, फिर बीच में एक ईमेल दे दी, फिर राइट में अपना लिंक्डइन लिंक दे दिया। ऐसे थोड़ा सा ना इसको अलाइन करो, या तो एक साथ करो, या मतलब मेरे को कुछ भटक रहा है इसमें हेडिंग में। आई टेल यू ऑनेस्टली, एजुकेशन अच्छा है, ओके, गुड। एक्सपीरियंस, ओके। ये कैसा एक्सपीरियंस है? ये तो फर्जी एक्सपीरियंस लग रहा है मेरे को। ये तो दिस इज नॉट एक्सपीरियंस, दिस इज बेसिकली कोर्स, राइट? सो दिस यू शुड ऐड इन academics और ट्रेनिंग। यहाँ से तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ऐसा प्रॉब्लम होगा, फिर मजा आएगा बहुत आपको। जस्ट टेलिंग ऑनेस्टली, डोंट बुरा मत मानो। बैक एंड डेवलपमेंट अगेन, एक्सपीरियंस मींस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स दिस। आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है गोपी? कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है गोपी आपका? क्यों? अच्छा, तो एनक्यूटी क्लियर करके फिर गए नहीं क्या आप? एनक्यूटी क्लियर कर लिया लेकिन गए नहीं मजे मजे के लिए ऐसे आप? मेरे एक टीचर थे कॉलेज में, ही यूज्ड टू गिव गेट एवरी ईयर, और क्लियर करते थे और सबको बताते थे, लेकिन कभी भी जाते नहीं थे। ही यूज्ड टू क्लियर गवर्नमेंट जॉब्स। मैं PSU क्लियर कर लिया इस साल, नवरत्न क्लियर कर लिया इस साल, IIT बॉम्बे क्लियर कर लिया। लेकिन वो हर बार हर साल क्लियर करते थे, लेकिन जाते नहीं थे, रहते हमारे कॉलेज में ही थे। सो वैसा शौक है क्या कि यू शुड पुट दैट योर वट एवर यू पुट इन एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स, अंडर प्रोजेक्ट्स में डालो उसको, वरना वो इट्स मिसलीडिंग एक्चुअली। बाद में जब पूछा जाएगा तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया। पहले हो सकता है वो उठा लें आपका रिज्यूमे और इंटरव्यू के लिए भेज दें, लेकिन जब पता चलेगा कि ये ऐसे गलत इन्फॉर्म कर रहे हो आप, तो फिर बहुत मजा आएगा फिर। सो पुट इट इनसाइड प्रोजेक्ट्स। Summary is okay. Training is okay. आप see, the thing with your resume, Gopi, is अच्छा you recently passed, हाँ, okay, okay। हाँ, so still एक्सपीरियंस में मत डालो, एक्सपीरियंस नहीं है ना वो, तो एक बस एक ट्रेनिंग कर रहे हो आप, आपको पैसा थोड़ी मिल रहा है, वो तो आप पैसा देके कर रहे हो, राइट? सो out of all the resume I have seen, the layout and everything, yours is perfect, but material is not there। बाकी सब लोगों के पास मटेरियल था, कंपनीज थी, चीजें थी। आपके पास फॉर्मेट है, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है, राइट? सो वर्क ऑन दैट और अच्छे से अपना कंपनी ज्वाइन करो, ठीक है? और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस में डालना। एल्स रिज्यूमे इज गुड फॉर अ फ्रेशर लेवल, ठीक है? आई गॉट वन मोर रिज्यूमे। Yeah, that's सतीश, mine. Please, can you? सतीश, राइट? Yes, yes. I'll save your resume and then I will go and I will open your resume. Okay, it's opening up। सतीश कुमार सिंह, जावा डेवलपर। नहीं है ये सही तरीका हेडिंग बनाने का, कुछ तो इसमें ऑफ पुटिंग है, पता नहीं क्या। जस्ट टेलिंग यू, जस्ट स्पीकिंग माय माइंड, कभी भी बुरा मत मानना इन सब बातों का, ठीक है? फाइल इन्फो, देयर इज नो लिंक्डइन, देयर इज नो वेबसाइट, देयर इज नो गिटहब। इतना बड़ा हेडिंग है, ऐसा लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बच्चे ने बनाया है कोई। तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा इतना बड़ा हेडिंग मत करो। और करो भी तो नीचे एक वेबसाइट का लिंक दो अपनी, या फिर कोई गिटहब का लिंक दो, लिंक्डइन का लिंक दो। एक्सपीरियंस ओके, कंपनी इज गुड। ओहो, बोल्ड भी करा है, वेरी गुड। लेकिन आपने जो बोल्ड करा है ना, उसमें नंबर भी होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन 40 प्रोसेसेस, कुछ ना नंबर जरूर होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं नंबर होगा ना
तो इम्पैक्ट आता है, ट्राई करो। वेरी गुड, अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस इज गुड, अच्छा है वर्क एक्सपीरियंस, एक पेज का है, दैट इज ऑल्सो गुड। आई डोंट नो इफ इट्स एटीएस फ्रेंडली और नॉट, लग तो नहीं रहा है एटीएस फ्रेंडली है देखने से। एजुकेशन ओके, टेक्निकल स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, गुड। लैंग्वेज हटा दो, ये लैंग्वेजेस का कोई यूज नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये लैंग्वेज लैंग्वेज कोई नहीं देखता, ये हटा दो, लास्ट जो सेक्शन है, नो नीड फॉर दैट। उससे अच्छा पुट योर अचीवमेंट्स। जैसे देयर वाज वन कैंडिडेट जिसका अभी एक स्पॉट अवार्ड था, किसी का एक कुछ था, इंटर्न में उसे अवार्ड मिला था, कुछ अवार्ड मिला है तो लगा दो, नहीं मिला है तो बना दो। लीडरशिप या कुछ स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स लिख दो, एविड बैडमिंटन प्लेयर, एविड क्रिकेट प्लेयर, क्योंकि स्पोर्ट्स से लीडरशिप का क्वालिटी थोड़ा सा डिफाइन होता है। रिज्यूमे इज गुड, अच्छा है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आई विल से। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये लग नहीं रहा है कि ये इट्स एटीएस फ्रेंडली और नॉट, तो इसके लिए जाओ और रिज्यूमे wordit.com पे अपना रिज्यूमे अपलोड करो और उसके बाद चेक करो। ओके, स्मृति हैज आस्क्ड कुड यू प्लीज शेयर द साइबर शीट लिंक। ये साइबर शीट लिंक क्या है? आई डोंट नो व्हाट इज साइबर शीट लिंक। एनीबडी नोज व्हाट इज द साइबर शीट लिंक? स्मृति, could you please unmute and tell me? Yeah, actually, like basically, you said cyber set like in our I think some time back. So अच्छा, ओके, हाँ, striper set. Okay, I think. साइबर शीट। भाई साहब, साइबर शीट को आपने साइबर शीट को साइबर शीट बना दिया, ऐसा भी मत करो यार, इतना भी। नो वरीज, आई एम जस्ट जोकिंग, किसी भी बात का बुरा मत मानना, हम सैटरडे Yeah, में yeah, है, sorry, like the थोड़ा name सा, was wrong थोड़ा सा actually. लाइट रखेंगे हम मूड को, और कोई, मेरा किसी का मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप में ही सब एक मजाक है। सैटरडे में हम सब बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठे हैं यार, और क्या इससे ज्यादा क्या बड़ा मजाक हो सकता है, राइट? ठीक है, सो आई शेयर दैट साइबर शीट। I think, are we done, or is there anyone who has some question Yes. left or something they want to ask? Please feel free. अभी भी 10 मिनट हैं, कुछ भी पूछो बिंदास, anything. There is no, ऐसा कुछ मत पूछना कि geeks और मेरा पंगा हो जाए, बाकी सब पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Yeah, I am not able to paste my resume, miss. How to send you my resume to you, Aadhar, for You review? can, Mit, right? So you can basically upload it into chat. There is a file option, right, in chat. You can upload your PDF resume, या फिर Google Drive पे अपलोड कर दो, उसका लिंक भेज दो मेरे को आप यहाँ पे ही चैट में ही। Okay, okay, I'm sending this now. Can you give some interview questions to practice? नीट कोड 150 करो, नीट कोड 150, और जावा डेवलपर इंटरव्यू में गीक्स फॉर गीक्स में भी हैव मोस्ट आस्क्ड जावा इंटरव्यूज, लाइक Yeah, दैट that, करो। I have just sent my resume to you. ओके, आई हैव गॉट वन अनिवेश रिज्यूमे आल्सो, फर्स्ट लेट मी डू दैट बिकॉज उनका पहले भी आया था, आई थिंक आई मिस्ड इट, सो Okay. लेट मी, आई हैव डाउनलोडेड इट। ओके, गुड, दिस रिज्यूमे लुक्स गुड, इसका हेडर इज गुड, अलाइनमेंट है, एलास्टिक एंड ओके, फिर इंजीनियर, टाटा टाटा, ओके। बोल्ड में डालो, इम्पैक्ट डालो, अपने वर्क एक्सपीरियंस में इम्पैक्ट नहीं दिख रहा मेरे को, ये बहुत हल्का लग रहा है आपका वर्क एक्सपीरियंस, एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा वर्क एक्सपीरियंस में। अगस्त 2023 से प्रेजेंट तक ये काम करा है, तो ये बीच में डॉटेड लाइन क्यों डाली है? ये समझ नहीं आएगा एचआर को, और रिजेक्ट होगा ये रिज्यूमे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डॉटेड लाइन उनको लगेगा मिस हो गई कोई कंपनी या कुछ ना कुछ। और सी वो जे वो हम्म या वो दो अलग जो अलग डोमेन में किया ना. हाँ, तो एक्सप्लेन करो फिर उसको अच्छे सो से। हाउ कैन हाँ, तो आई. जस्ट पुट
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डोमेन दिस, एंड देन उसमें लिखो, नीचे वाले में लिखो, डॉटेड लाइन हटाओ और लिखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डोमेन दिस या प्रोजेक्ट दिस, ओके अगेन ठीक है ठीक है। राइट। और जो पास्ट का एक्सपीरियंस होगा वो नीचे आएगा, जो करंट एक्सपीरियंस होगा वो ऊपर आएगा। आपका उल्टा लग रहा है मेरे को, है ना? या यस करेक्ट। हाँ, तो ये इसमें गड़बड़ है, इसको ठीक करो आप, वरना एचआर ओके। कंफ्यूज होगा, और एचआर कंफ्यूज होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग लिस्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। मे बी नहीं यू नहीं कैन वो डू। मैं अभी इसको तो अब उसको अभी अपग्रेड करूंगा वो, हाँ बट ये है कि मैंने वो नहीं किया JBDL जो कराया ना डेटा हाँ, लाइब्रेरी, सो पेमेंट बेसिकली मैं एप्लीकेशन कॉपी को पेस्ट डाल। नहीं करना चाहता था। तो बट हम्म, बेसिकली मैंने खुद अपना बनाया इसको सीख। हाँ कुछ नया हाँ, मैं ट्राई करूँगा ऑफ कोर्स। यू कैन पुट लाइक, मतलब शॉपिंग लिस्ट भी लिखना है ना, तो पुट लाइक टू डू इस्ट क्लोन ऐसे करके कुछ। कुड यू हाँ हाँ कुड यू वही म्यूट? मतलब बेसिकली आई हैव फ्रंट एंड फॉर दिस, सो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हाँ ओके, लिंक डालो प्रोजेक्ट्स का। था। ओके। लिंक नहीं है, गिटहब का लिंक नहीं डाला आपने। लैंग्वेज इज गुड, स्किल्स इज गुड। रिज्यूमे वर्डेड का स्कोर क्या है इसका? ये लग तो रहा है एटीएस फ्रेंडली लग रहा है मेरे को ये रिज्यूमे तो। ये ओवरलीव की वो है हाँ टेक्निक। हाँ हाँ, डीडी डीडी टेम्पलेट का बनाया ना आपने। क्रोम डेव टूल्स, ठीक है, वेरी गुड। ओके, एजुकेशन इज गुड, कोर्स वर्क इज गुड। हाँ ठीक है, एक इसमें सेक्शन ऐड करो, कोर्स वर्क की जगह सेक्शन ऐड करो अचीवमेंट्स। ओके। अचीवमेंट्स में एक तो स्पोर्ट डालो, आप क्या स्पोर्ट खेलते हो, टेबल टेनिस, कुछ भी डाल दो, ठीक है। एविड एविड टेबल टेनिस प्लेयर, या एविड जिम, मतलब कुछ भी, एंथुजियास्ट, क्रिकेट एंथुजियास्ट या क्रिकेट प्लेयर, या गॉट इट। उससे लीडरशिप आएगा। और फिर उसके बाद सम काइंड ऑफ कि मेंटर्ड टू इंटर्न, या कुछ कुछ ना कुछ ऐसा डालो कि इन अचीवमेंट्स, और अगर कुछ अच्छी अच्छी ऐसे सब्सटैंशियल अचीवमेंट है जैसे स्पॉट अवार्ड या असली में कुछ है, तो वो डाल दो यहाँ पे, उसका लिंक, आई डू ऐसा हैव, कुछ। उसको करता हूँ। हाँ, गुड गुड गुड। अच्छा अच्छा रेज्यूमे है, इम्पैक्ट डालो अपने वर्क एक्सपीरियंस में, उसको ठीक करो। वर्क एक्सपीरियंस में बहुत गड़बड़ है, ये ऊपर नीचे कर रखा है और क्लियर नहीं है, इसको ठीक करो। और बाकी अपना गिटहब लिंक डालो, एंड आई होप आपने ओके। नोट कर लिया है सब, राइट? या नोट कर लो, फिर तो भूल थैंक यू। जाओगे, राइट? वेरी गुड, नहीं नहीं कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस एक्सपीरियंस में है, उसको ऊपर नीचे करो, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऊपर है और करंट एक्सपीरियंस नीचे है, जो कि एक प्रॉब्लम कर रहा है। ओके। ठीक है, गुड, वेरी गुड अनिवेश, या थैंक्स। awesome. Okay, I will now download Amit's resume. अमित, आपका रिज्यूमे सबसे पहले वर्ड में क्यों है? वर्ड में नहीं होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए। डाउनलोड कर लिया है, इसको मैं खोल रहा हूँ। अमित कुमार रिज्यूमे, अनरीडेबल कंटेंट। विंडोज फेल कर दिया आपने तो, अपने रिज्यूमे से अनरीडेबल कंटेंट दिखा रहा है। क्या हुआ It's not you, open. It's not opening. It's showing unreadable content. Microsoft Word is saying unreadable content. So, do you have a PDF? yes, yes, I have PDF. I just हाँ, gave you. PDF I'm आप just भेज दो मेरे को। sending PDF file. Sure, sure, sure. Okay, so I think last question, Amit, will be Amit's. After that, I don't think we have any other questions, so we will be good to close after that, right? I hope सबका क्वेश्चन आंसर हो गया है। Yeah, yeah. Send no. Other. Okay, I will now download it. Okay, okay, very good resume. Nice, nice, nice. Oh, very experienced. Ta-ta-ta. Oh, good. You have made it bold also. Nice. Track record. Ta-ta-ta. Java. Okay. Core competencies. Okay. ये कोर कॉम्पिटेंसीज में और जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में इतना गैप क्यों है? या फिर अगर वो गैप रखना है तो फिर ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग एकदम लाइन से क्यों टच हो रहा है?
Okay, इसको थोड़ा इंडेंटेशन मतलब अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसलिए बोल रहा हूँ। okay, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड ओनली। इसमें स्प्रिंग बूट और ये सब भी डाला है, अच्छा स्प्रिंग बूट इज देयर। Add hibernate, add whatever you are learning in this, right? So you're yeah. very experienced. That is very good. I'm not qualified to give you any advice on this, but yeah. Java 8, functional programming, okay. CMS, good, 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 very good experience. Operating system you can remove. Like right now, no one mentions operating system. Operating system is development tools, Eclipse, that is fine. Monitoring tools, Grafana, very good. You have very good experience. Plus awards and recognitions. Awards and recognitions को last में रखते हैं. Okay. After work experience. Okay, Okay, very good, very good companies. Plus, okay. ये एक मेरे को एक चीज मिस लग रही है, अच्छा ओके नहीं नहीं 2008 नहीं वो 18 है. Okay, wow, 10 years and then after that, okay, very good, very stable resume. I like this resume. It's a very tells me that candidate is stable, candidate is knowledgeable, and yeah, I like this resume. I would hire this person. Previous experience, education, so as per there are annexure. two ये improvements on. annexure, ये Yeah, yeah. annexure क्यों है इसमें? क्या क्या था? इतना annexure क्यों है? annexure को क्या करो आप, ये जो देखो 2 पेजेस में रखते हैं रेज्यूमे को, और जो एनेक्सर है ना उसको लास्ट में अपने एक सेक्शन बना दो एनेक्सर, और इस एनेक्सर का एक अलग से डॉक्यूमेंट बना दो सर, और उसको ना अपलोड कर दो गूगल ड्राइव पे, और उसका लिंक यहाँ पे शॉर्टन करके डाल दो, एक लिंक शॉर्टनर होता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को लेके जाओ किसी स्मॉल पीडीएफ या फिर किसी पीडीएफ स्प्लिटर में, ठीक है। लास्ट के जो 2 पेज हैं, मतलब जो एनेक्सर है ना, उसको स्प्लिट कर लो इसमें से, उसका एक अलग डॉक्यूमेंट बना दो, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट बन गया, उस डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो, उसको शेयर कर दो टू ऑल। उसके बाद उस जो गूगल ड्राइव का शेयर वाला लिंक है, उसको कर दो शॉर्टन, देयर इज अ लिंक शॉर्टनर होता है, शॉर्टन कर दो, और उसको ऐसे कर दो, व्हाट इज bit.ly/अमित कुमार हाइफन एनेक्शर ऐसे करके, और फिर उस लिंक को यू पुट इन द लास्ट पेज अंडर वन सेक्शन एनेक्शर। Okay, okay. तो इससे आपका रिज्यूमे इतना बड़ा नहीं लगेगा, और किसी को अगर जानना होगा आपके बारे में तो दे कैन गो एंड लुक दैट एनेक्शर. But Okay. yeah, very good. Yeah. Lot of experience, lot of work you have done. Very strong resume, I will say. Thanks, Aadhar. Great. Okay. Smriti is asking why PDF is better than Word. Any special encryption used across operating systems? Like generally, PDF is better than Word because, like, no, it's not better or worse. It's just like whenever I've been asked by HRs, they've asked me to share in a PDF. When you upload, they ask you in PDF, but Word maybe might be they are able to do Smriti. But yeah, No, मेरा जो no, experience है, yeah, basically, like Windows was able to open the Word, was not able to open Word, right? Some issue was happening, but it used to open PDF. So, bit curious in that part, like, what is it the was saying reason? that there is some unreadable characters in that resume. I don't know which unreadable characters might be there, but हो सकता है, might be, Okay. not very sure. But हाँ, when you send a देखो, और second thing इसलिए भी, you must know, right? There is a Mac operating system, there is a Linux operating system, there is a Windows, there is a Mac होता है, तो Mac Word अच्छे से नहीं खोल पाता है, या फिर they will open it, तो there is a another stage kind of application होती है, उसमें खुलता है Word document, जो कि एकदम अच्छे से पार्स नहीं होता। मैंने यूज करा है मैकबुक एयर, तो मेरे को पता है उसमें, जब मेरा भाई मेरे को भेजता था अपना कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, तो अच्छे से डज नॉट यूज टू पार्स, सो वो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पीडीएफ विल ओपन इन ऑल प्लेटफॉर्म्स, सो बी सेफ एंड सेंड Yeah, पीडीएफ, yeah. आई विल से. Mhm. या Mm. सो आई थिंक, आई होप इस सेशन का कुछ वैल्यू एवरीबडी ऑफ अस वाज एबल टू डू. आई एंजॉयड अ लॉट. I hope I was able to little bit give you some value, some answers. But yeah, that was this session. 2 hour session. We are done. And yeah, I hope you got some value out of it. You enjoyed this Saturday night. And now, जिसका भी dinner रह गया है, जाके dinner करो, खाना खाओ. Right? So thank you so much for joining this session. And yeah, next week say you will continue your
सेशंस विद मीत और अच्छे से इस कोर्स को करो। और दिस कोर्स इज वेरी गुड। दिस कोर्स चेंज माय लाइफ, चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ माय लाइफ। एक चेंज मैनेजमेंट के इंसान को जो रिपोर्ट भेजता था, उसको इट टर्न्ड इनटू उसको इट टर्न्ड इनटू अ जावा डेवलपर, देन अ सीनियर इंजीनियर, और अब तो लाखों में बोनस आता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मोटिवेट यू। इफ यू वर्क विद गुड कंपनीज तो 1 ईयर सैलरी आपको बोनस में मिलता, सॉरी 1 मंथ सैलरी आपको बोनस में मिलता है। और अगर आप सिंगापुर में काम करोगे तो आपको उसके अलावा एक और मंथ की सैलरी भी मिलती है। बहुत सारी चीजें होती हैं डिपेंडिंग ऑन, आप अगर आप मेरे से भी बड़ी कंपनीज में जाओगे प्रोडक्ट बेस और उसमें, तो स्टॉक्स मिलते हैं क्वालकॉम और उस सब में। तो देर इज नो लिमिट। मेहनत की बात है और किस्मत की भी बात है, राइट? आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन जस्ट फॉर दिस सेशन। ओके, so thank you so much guys. We will meet someday hopefully, and आपने sessions continue करोगे next week से। And thank you so much for joining this session. Now we will say goodbye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Utpal. Thank Thanks, you. Adam. Thank you.